50 किया 40 गेंदों पे डाइव करके उन्होंने कैच मुकम्मल किया 50 रन यहाँ हैरिस मुकम्मल हुए उनका बैटिंग का मुजाहरा cracking stroke wow बोल्ड हो गए इस बार अब स्टंप्स का सफाया करा लिया जोरदार अंदाज में 50 रन मुकम्मल किए कप्तान ने रेड बल्ले के साथ खेला और अपने शानदार 50 रन मुकम्मल किए फैजान ने he's picked this one for a six oh my god he's won it for the team Very good morning from Rawalpindi Cricket Stadium. It's match number 13 of Barrier Town Champions Cup T20 coming to you between Lake City Panthers and Engro Dolphins. Easy morning here in Rawalpindi. The sun is out. Both the teams came out nice and early. Raira and Sanullah, quite a few big names. Fahim Ashraf, the skipper. Thought long and hard how to make a comeback into this second round of the championship. Lake City Panthers also need to start putting some wins on the points table. Haider Ali has been in very good form and so has been the Rawalpindi weather. But this table is all to play for coming into the last few days of the group stages. Allied Bank Stallions at the top. UMT Markhors, same points but inferior run rate. Remember, the top team will go to the final and the two beneath them will play a qualifier. Well, Lake City Panthers have heavily relied on Haider Ali, who's been in scintillating form. He's been very consistent. His strike rates have been amazing. His ball striking was never in doubt. But what he's put right in this tournament is his consistency. He's batting at number 3, taking responsibility and guiding their entire batting lineup. He is amongst the top run getters and so good to see him in such good form. Good time to introduce Marina Iqbal, the former Pakistan skipper, alongside me. Good morning, Marina. Good morning, Shah Faisal, and to everyone. Well, now, yeah, we all know that, especially Haider Ali, he's looked apart and he's taken responsibility, as you said. But most importantly, he's showed us how one should be batting on these surfaces. And he's batted superbly against different oppositions. And I think again, Lake City Panthers will rely on him and also on Umar Siddique as well. Well, now it's beautiful morning and Shah Faisal, you were out there in the middle with Salman, but let's say what you have to say. Another beautiful morning here in Rawalpindi, probably the warmest of all. The temperature at the moment is 16 degrees and the humidity is 32%. The dimensions for this tournament all around in these pitches has been 66 meters, just even all round. And talk about the pitch, it's pitch number 8 that we've used before. And to have a better insight, I've got alongside me Salman Butt. If we just have a look here, Salman, what do you make of this surface? It's produced high-scoring games. Thank you, Shahji. Yes, it's the same strip which was used last night, and we saw the batters flourishing in the end, whoever gets set. And obviously, it gets better as the day goes on. And remember, today is an hour delayed start. It is 12 o'clock, so it is expected to play better. Ball coming onto the bat. We saw 188 chase down, and it pretty much looks similar, just the patches have been worked out. I think it should be a wonderful pitch for cricket. There's always an early movement linked to the weather at the moment, but generally, I think good for batting. And talk about the lengths for the bowlers, the quicker bowlers. What do you suggest in terms Hard of lengths, slower ones into the deck, and maybe good yorkers, which we have seen a bit less.
very few Yorkers in this tournament. Yeah. What's the reason for that, do you think? Well, I don't know. I think the boys are coming from first-class cricket, where they've been mostly bowling the length balls, and at times it takes time to adjust your line and length, and maybe in the second round we see them do better. Well, this is the views from the expert. You heard it from Salman. It's a very good cricket pitch in general, and it's no different today. Well, that's how it is described, has been one of the best surfaces so far of this tournament. And no doubt, plenty of runs were scored. We've managed to see spinners getting some purchase. Early on, the pacers did manage to get some movement off the seam. And it again looks like a decent surface. It's probably the best pitch, pitch number 8. It has produced high-scoring games. And once again, it's a good-looking pitch as well. Although you see those cracks, it won't have any effect on the proceeding. It's rolled in, it's very hard, and it's a very good cricket pitch. Crowds thoroughly enjoyed the action yesterday. Looking at the conditions in terms of weather, in terms of pitch, it's just about perfect for a game of cricket. And let's see, it'll be an important decision. Like Salman said, it's an hour later start. What would the skipper decide at the coin toss? Ali Yunus was with both the captains just a while ago. Yes, match number 13 of Barrier Town T20 Champions Cup. It's Engro Dolphins taking on Lake City Panthers. I've got the two captains alongside me, Shadab Khan, Fahim Ashraf, Kamran Chaudhary, the match referee, all in readiness. Shadab Khan, please give it a spin. Heads is the call. Tails it is. Shadab Khan, टॉसेस तो आप सारे जीत रहे हैं, मैचेस हारा था काफी टॉसेस हार गया। आज क्या करेंगे? हम बॉलिंग करना चाहिए क्योंकि अर्ली ऑन स्टिल क्योंकि कोल्ड वेदर है तो स्टिल थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है और कोशिश करेंगे हम उसको यूटिलाइज करें। काफ़ी क्लोज मैचेस खेल रहे हैं आप, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे हैं। क्या वो कंसर्न है एज अ कैप्टन? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे जो की मोमेंट्स हैं मैच के वो हम जीते क्योंकि जो आप क्रूशल स्टेज आता है तो उसमें अगर आप वो मोमेंट जीत जाते हैं तो आप मैचेस भी जीतते हैं, तो कोशिश करेंगे कि क्रूशल मोमेंट हम जीत जाए। और कोई टीम न्यूज़ चेंजेस कोई? 2 चेंजेस हैं, शजील भाई की जगह बंगलजाई आए हैं और मोहम्मद उमर की जगह अली रजा। ऑल द बेस्ट शादाब। थैंक यू। फहीम अशरफ, बैटिंग फर्स्ट, कैसा देख रहे हैं डिसीजन को? देखें जी, जो अर्ली मैचेस हुए हैं टूर्नामेंट के उसमें तो मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जो लास्ट 3-4 मैचेस हुए हैं तो उसमें ऐसा नहीं, क्योंकि हमने भी लास्ट टाइम पहले बॉलिंग की थी, मॉइस्चर था लेकिन वैसे नहीं था जैसे अर्ली था। अगर आप ऑन पेपर देखें आपकी टीम तो सारे गुण मौजूद हैं T20 क्रिकेट के, लेकिन क्या वजह है कि मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं? देखें जी, हम थोड़ी सी गलती जो कर रहे हैं वो बैटिंग में खास तौर पे यह है कि हम जो की मोमेंट है ना, जहाँ पे आके हमें मैच फिनिश करना चाहिए तो सेट कर सब रहे हैं, लेकिन जहाँ पे टीम की ज़रूरत होती है वहाँ पे आउट हो जाते हैं, या बॉलिंग में भी है या फील्डिंग में छोटी छोटी गलतियाँ जो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि डे बाई डे जो गलतियाँ इंप्रूव करें। अभी जैसे अभी टूर्नामेंट का हावे हुआ है, अभी ये नहीं है कि टूर्नामेंट हमारे हाथ से गया है, अब कोशिश यही है कि जितनी हम अपनी पीछे गलतियाँ की है उसको बिल्कुल ही मिनिमाइज़ करें ताकि इधर से टूर्नामेंट को लेकर चलें। क्या टीम में चेंजेस करनी होंगी या एटीट्यूड में चेंजेस करनी होंगी रिजल्ट चेंज करने के लिए? थोड़ा सा मुझे लगता है कि एटीट्यूड में हमें चेंजिंग की ज़रूरत है एज अ फील्डिंग यूनिट, क्योंकि फील्डिंग में जब आप अच्छा करते हैं तो आपके हर डिपार्टमेंट में टीम में एनर्जी रहती है। सारे मैचेस में चेंजेस किए हैं, आज कोई चेंज है टीम में? आज बिल्कुल एक चेंज है, रमीज़ की जगह शयान है। चलिए, ऑल द बेस्ट फहीम अशरफ। थैंक यू वेरी मच। Right, the news from the toss is that Lake City Panthers have won the toss and decided to bowl first. Such has been the pattern, Lake City Panthers winning the toss and electing to field first. With the umpires taking to the field, Faisal Afridi and Muhammad Asif. Glorious sunshine now that early fog has started to lift, leaving wonderful conditions. Lake City Panthers led by Shadab today, joining in the field, and this is Engro Dolphins coming into the game with one change. Shayan replacing Ramiz Jr., the leg spinner. Formidable lineup on paper if you look at it. Sabzada Farhan, Tahir Beg, Herrera, Umar and Qasim Akram forming a very, very strong batting lineup. All-rounders Fahim and Akhlaq, and then the 3 seamers alongside Shayan, the left-arm spinner. And the other side, Lake City Panthers, well, they went with 2 changes. Bangalzai walks back in.
Shajil has been dropped. Here it is. Bangalzai gets another chance. Shajil has been dropped. They have to rely more on Heather and Umar. Danish also good contributor with the bat, and so is Mubassir and Ali Raza. It's good to see him back in the attack. Muhammad Umar has been dropped, strengthening their pace attack. Leaving out Sharjeel. Not many surprises really, because he didn't look the part. Well, we saw a great crowd yesterday. They thoroughly enjoyed the entertainment, a last ball finish, high scoring games. They've started to pour in already. I think it's a local holiday here as well, so we may see another good attendance here. That really played the part in the entertainment and creating the atmosphere, the crowd yesterday. And all of us enjoyed that. Sahibzada Farhan, prolific at this level. That's 2,500 runs at average of 30 and a strike rate 126. He has 2 centuries also in this format. Tahir Beg, both are really good attacking batters. Tahir Beg and Sahibzada Farhan, he did get some runs, but Tahir Beg, he can make a huge impact. Still needs to play a big innings here, and it's good to see him back. Ali Raza, he played a couple of games, was decent enough. He picked up just 1 wicket. Economy 8.50, but he will surely learn new skills, how to improve his temperament on this level. And it's good to see Lake City Panthers backing him. It's not a bad idea to give him a couple of games and then bench him for a couple of games, so he could just process the learnings of playing at this level and see what improvements he can make when he gets another opportunity. That's what will be very interesting to see. Play is the call. Died on the way to the wicketkeeper. We haven't seen a lot of that, Marina. Yeah, with pitches now being reused, they might slightly be on a lower bounce side, but still it's got some decent pace. We've seen anything dragged short went on to the keeper. So it's just the first delivery, just a little shy. Faisal Afridi, a very experienced campaigner on field, and we've got a lot of experience. Ali Raza. That's good bowling. Just angling in, good length to start off with. Sahibzada Farhan, he likes to stay on the back foot. He prefers that stance. And his counterpart, Faisal Afridi's, is Muhammad Asif, another senior campaigner. We've got their work cut out in the middle. Glad that it's a good morning here at Rawalpindi Cricket Stadium. We've been very lucky with the weather. I know it gets chilly towards the back end of the double headers. But the atmosphere was heated up by the contest last night. Today is just about the perfect timing for a game of cricket for this time of the year. Starting off at midday. Just the one game today. Wrapped him on the pads, shouting, and the finger's finally gone up. Umpire Faisal Afridi thought long and hard, and then raised the finger. Young Ali Raza makes immediate impact. Sahibzada Farhan, he doesn't like to commit on to the front foot. He likes to hang in the crease, and that's why he had to pay the price. There was a sharp nip back end from Ali Raza. No problems there. He's quite disciplined in that zone. But have a look at that. Good length, just skidded on and trapped Sahibzada Farhan on crease. It took a while, Faisal Afridi, and decided to give the decision in favor of Ali Raza. First one down for Engro Dolphins. It's a big one. Sahibzada Farhan gone or not. One down without scoring.
Early exit for Sabzada Farhan. Sees the advent of Mohammad Herrera. He's in the middle. He's an opener with the red ball, so definitely not a new role for him walking out in the first over. Ali Raza, who's slipped himself quite nicely into those first three deliveries. Probably Sabzada Farhan was surprised at the sharp movement. Herrera still needs to do justice to his talent in this format. He's prolific in red ball cricket. Gets another opportunity. Was working hard in the nets before the start of the game. Now he has a chance to put it into practice and make a contribution for his side. Oh, very, very tentative poke. This was a beautifully bowled delivery. Ball jagged in and kept coming in. Buys the signal. And that's really good start from Ali Raza, hitting the right length and just getting enough nip back in and settling Sabzada Farhan on that occasion. He was on crease, on his toes. He's not that tall of a guy, but well, he took his while, Faisal Afridi, and probably thought that it might be clipping. He was hopping, Sabzada Farhan. Hit him just above the roll. Oh well. There are two people in trouble at the moment. And Herrera, the batter, and Umar Siddiq, the wicketkeeper. I think he got a knock on his fingers. This was superbly bowled once again from young Ali Raza. All at sea. Ali Raza, when you see him and when you watch him bowling, and even in ground, you wouldn't get the impression that he's quick enough because of the physique, the slim physique he has, but he can generate some pace off the wicket. Nicely struck and very well fielded. That's a very good cricket all round. Haider Ali, he can do no wrong in this tournament. One done, 1 for 1, Engro Dolphins. Very good start for the Lake City Panthers through Ali Raza. Now the experienced campaigner, Ahmad Butt. Very reliable at this level. He does a job with the new ball. He's a good hitter, an excellent fielder. Very good all-round cricketer. On the brink of a personal milestone. Nearing in on those 100 wickets in this format. Just one slip and a very wide slip. Almost a third slip. Just a little bit of shape. Well, cast our minds back to Ali Raza's first over, and it was an absolute beauty. The youngster started off by taking the wicket of Sabzada Farhan, but then he also went on to trouble Herrera and Tahir Beg. Herrera has got a little bit of trouble with his bat, is it? Yeah, Herrera seems like he's not happy. And that's the thing with the batters, they need to be pretty satisfied. But this is the first over. Ali Raza started off things quite tight, disciplined within the line and stumps. Just nipping back that one. And doing Sabzada Farhan, and follow-through deliveries were on spot. Some sharp nip and see movement off the surface. He can generate decent pace. It's been a brilliant start yet again for this youngster. Bowled him. The off stump goes flying. Herrera thinks this ball didn't bounce as much as he was expecting, but Ahmad Butt has gone through him and knocked the off stump right out of the ground.
Yeah, as a batter, you need to be aware of the conditions. These surfaces, as we mentioned, are now being reused. So you need to be aware of it. And then again, Ahmad Butt is someone who can skid it from the hard length. He won't really get enough bounce on it, and it wasn't the shot he was trying to play. Chopped on stumps. Should have played off the back foot towards the offside. Paid the price. And his struggles continue in this tournament. Herrera gone on not as well. 2 down for Engro Dolphins on 1. Umar Amin, the experienced man, local boy from Rawalpindi. Well, he's walking into a crisis. Shadab will be delighted with this start. Umar Amin's average is 28 and that strike rate of 120. No hundreds, surprisingly, in this format. 82 is his highest. 23 50s. Ahmad Butt's got a slip. Ahmad does have the tendency to bring the ball into the left-handers. Ball from pretty close of the stumps. No! What a shot that was from Herrera. The ball was nipping away and he wanted to fetch it right across. Got defeated with the movement and with the length. A poor shot selection. The length wasn't there. And it was a half-hearted shot. Just the wild swing of the bat. Look at from where the bat is coming. From probably that third slip area. Huge bat and pad gap, and that's why he got the inside edge. You won't expect that from Herrera. Is actually a good technical batter, but on fault here. Yeah, the order of the day in these early phases have been to just take your time, play the ball close to the body. And I'm pretty sure Herrera would not want to see that replay himself. It looked very ugly, the way he finished up and the way the stump went flying off the ground. Surprisingly, the slip has come out. Well, looking for that inward movement. Maybe he's got a catcher at short mid-wicket catching now for Umar Amin. It went in that direction and it will go to the boundary. Slip was removed and the ball went right there. I really don't agree with this sort of field, especially when you've managed to get 2 early wickets. Even in the previous game, Shadab was very quick to go defensive. Have a look at that outside off stump, wild swing from Umar Amin, no footwork. Should have been a straightforward catch for the slip. Well, I was about to say, is it going to be a double bluff and the next one will be an in-swinger? But it's not going to happen because slip has come back. Just 1 ball too late. Will that be an out-swinger or an in-swinger? That was an in-swinger. The finger should go up because it was plumb in front. Ahmad Butt foxing Umar Amin with the in-swinger after it placed a slip in there, and Umar Amin is caught plumb in front. What a start Lake City Panthers have had. Both their pacers are on spot picking up wickets, and Engro Dolphins are now diving deep into hot waters. Ahmad, he is a very experienced bowler. The first one, it was going away, pitched outside off stump. This one came back in, fuller in length, and trapped Umar Amin right on crease. A straightforward decision. Huge troubles. Umar Amin gone on 4, 3 down on 5.
5 for 3. Who would have thought? It's a 12 o'clock start. Little bit of moisture in the air, but it's not that bad the way the scorecard would suggest. Qasim Akram is in, another youngster. Both of the batters are on 0. Slip in place for Ali Raza. He went for the Yorker. Just misdirected. I don't think he needs to do anything different apart from what he was doing in the previous over, hitting the hard length, nipping the ball back in, and have a look at that. This one, the front leg going across, and probably he was hoping for another outswing delivery. The previous one was that, but Ahmad Butt has got immense control. Experienced one, brought that back in, pitched up to get enough swing. There's a little bit of a cat and a mouse in that over. Last 3 deliveries between Ahmad Butt and Umar Amin. Nicely left alone by Tahir Beg. Earlier in the over, Ahmad Butt had removed the slip and bowled an outswinger, which went through to the boundary, to the third man. And then after that ball, Ahmad Butt immediately put the slip in, and Umar Amin must have been thinking about another outswinger. But cleverly, Ahmad Butt bowled an in-swinger. But the best thing about it was pitched at the right length and the right line, completely outfoxing Umar Amin. Good quality cricket from an experienced man like Ahmad Butt. Has been a great start for Lake City Panthers. Ali Raza was brought back in the playing 11. His first over actually set the momentum. Great deliveries, getting Saibzada Farhan out in the first one, and then Ahmad Butt doing what he does. Engro Dolphins, they need to rethink about the conditions and probably now slightly adjust to what the situation is. Qasim Akram, he's got a bit of experience. Yeah, that's when slip was removed and he bowled the outswinger, and you can see in the background the slip was in place and he bowled an in-swinger. That's a very clever piece of cricket from Ahmad Butt. Engro Dolphins, what they need to do from here, definitely they need a partnership. Well, what Qasim and Tahir can do, they both can play shots. They both can run really quick between the wickets. At times you do get intimidated by how the start has gone for you as a team, but I don't think these surfaces or these conditions are that threatening. Yes, be aware of your own shot selection, but you will get value of shots here. So just be aware, keep rotating the strike, and keep the intention positive. Whenever there's a bad ball, make sure that it travels to the boundary. Angling in. Just the thick inside half of the bat. Qasim Akram by nature is an aggressive batter, so is Tahir Beg. A bit of a counter attack would not be a bad idea, but then you've got to be very clever about choosing the areas you want to target, the balls that you want to target. Yeah, for Ali Raza, I wouldn't mind Tahir or either Qasim just standing one step outside of the crease just to counter that in-swinging deliveries and the hard length. He's usually predictable on that length. And probably play with a straighter bat. Don't try to go across the line. Couldn't pierce the field there. Haider Ali is feeling the pain. Did he just jam his fingers into the ground while stopping that ball? But he's in pain. There's no doubt about it. That's not what Lake City Panthers would want. The star batter, the man in form. Yeah, he took off, but yeah, it seems like the fingers did get stuck in the ground. Straight away, you can see it.
Engro Dolphins are in all sort of troubles, and so is Heather Ali right now. Crowd coming in. He's got a holiday in Rawalpindi. Would be coming in to watch their favorite stars in action. Yeah, but it's a sunny day, that's a good thing. Yesterday it was quite chilly. Sun is out enjoying the action. There you go. More crowd enjoying their time. And that's how things started. Saibzada Farhan trapped on crease by Ali Raza with a brilliant delivery. Just nipped back in. And this one, poor shot from Herrera. It wasn't that shot, trying to pull it. That was a brilliant setup by Ahmad. Undoing Omar Amin with a peach of a delivery. Very, very indifferent batting from Engro Dolphins. You'd have to say the bowling has been pretty decent. Ali Raza bowled a very good first over, and Ahmad Butt always reliable with the new ball. That's not a clean strike, and gone. Or is it dropped? Wasim Jr. was trying to get his hand above his eyes so he can cover the sun. No cap, no glasses. Wow. 3 overs gone, Engro Dolphins 3 on 9. Well, I cannot believe this. I know he's looking into the sun. He's an international cricketer. Look at that, those hair coming right in front of his eyes. No glasses, no cap. Arafat Minhas has got all what is needed. Wasim Jr. has not. Well, these are the regulation catches, and if you as a player don't opt to put on glasses, the other thing you can do and should be doing is place your hand up in front where the sun is coming from. He had ample time to set himself underneath it and put your one hand to just guess where the line of the ball is, where it's coming. If not, then please put the gear that is required. Mohammad Wasim would want his ground to open up and swallow him. That was truly embarrassing. Dropping a catch on a cricket pitch is always embarrassing, but a catch like this, oh my word. I think Qasim Akram should walk towards Wasim Jr. and thank him, because that was a poor shot from him. He's played enough cricket at good level. He should be aware of the situation his team is in and the conditions out in the middle. It wasn't a good shot to offer. Well, another airy-fairy. I'm glad you reminded us of what a kind of shot was that from Qasim Akram, because Wasim Jr. took all the attention because of his horrible miss. But yeah, it was a poor piece of cricket all round. That was not the shot from an experienced man like Qasim Akram. And then the drop. Ali Raza, well, you'll remember this for quite a while, I think. We'll be looking for 2 here. It's one of a very rare occasion when the ball had gone
past the 30-yard ring in this first 3.4 overs. I'm not sure that either Qasim or Tahir are picking up what the conditions actually are in the middle, because the ball is cripping a little bit into the surface. It's not easy and it's not wise to play across the line trying to turn the face of the bat. They both can play with straighter bats. They have good range of shots. That's much better. A quick single to put pressure on Lake City Panthers. Here's a question to you, Marina. Fahim Ashraf has looked good with the bat in this tournament, and the kind of form that his other batters have had. Being an international all-rounder, I would have thought Fahim Ashraf can come in up the order and take the responsibility, show it to everyone what he's made of in this team. I did ask that question one of the post-match presentations, but he said that he's trying to rotate and find the best batting lineup. But yes, correctly pointed out that he's more experienced to deal with these sort of situations. Or cut and straight to Fahim Jr. So he should be batting up the order as he's the only man in form for Engro Dolphins. Nonetheless, 4 overs gone, 3 down on 14. ये पहले 4 ओवर्स में हमने इस तरह की कमज़ोर स्कोर लाइन देखी नहीं है किसी भी टीम के नाम सामने. एंग्रो डॉल्फिन्स ने 14 रन्स पर 3 विकेटें गंवाई हैं. सकलैन मुश्ताक इसलिए इस वक्त बेहद मुतमईन मेंटोर हैं, उनके साथ मौजूद हैं उमर रशीद. ये पुराने कोचेस में शुमार किए जाते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में. 1 रन के लिए स्टीयर किया, बहुत ही अच्छा स्पेल किया है. नौजवान अली रजा ने बड़ी नपीतुली बॉलिंग की. अम्माद भट्ट, उनको भी नई गेंद कराने का फैसला सही साबित हुआ. सलमान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत ही आला बॉलिंग की है अली ने भी और अम्माद भट्ट ने. विकेट्स को अटैक किया, स्टंप्स पे बॉलिंग की है, राइट चैनल्स में बॉलिंग की है और चांसेस क्रिएट किए हैं. ऑल्दो के जब 1 रन पे 2 विकेट गिरे थे तो जब स्लिप हटाई कप्तान ने तो उसी गेंद पर उमर अमीन की स्लिप लगी और जो है वो 4 रन हुए, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो अगले ही गेंद पर लेग बिफोर हो गए. ये अच्छा शॉट है लेकिन थर्ड की तरफ जाएगा. और फिर एक जो कैच छोड़ा है, अगर हम देख सकें अभी भी फील्डर वसीम जूनियर को स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखिए कि इस मौजूदा दौर के अंदर अगर आप ये देखिए, अब इन्होंने सन ग्लासेस पहने हैं और कैप भी नहीं पहनी हुई इन्होंने, और ये उधर फील्डिंग कर रहे थे जहाँ पे सूरज बिल्कुल सामने है. तो इससे टीम को एक कह लीजिए कि हैवी लॉस, ये बड़ा जो है ना नुकसान हुआ है. ये देखिए कासिम अकरम ऐसे प्लेयर है, लंबा खेले तो मैच बदल सकते हैं, और इन्होंने आगे अपने हाथ भी नहीं किया, जो एक सिंपल टेक्निक है सन को अवॉइड करने की. ये अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट, और 4 रन मिलेंगे ताहिर को और एंग्रो डॉल्फिन्स को, जिनको अशद ज़रूरत है एक पार्टनरशिप की और एक मौजूदाती इनिंग की ज़रूरत है इन्हें, ताकि इनके हालात बदलें जो कि अभी तक पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं. यहाँ अच्छा खेला ताहिर ने, बिल्कुल अपने बल्ले को सीधा रखा, ज़्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं की गई अभी भी, क्योंकि दायरे के ओवर्स में 2 खिलाड़ी डीप थर्ड मैन और लॉन्ग लेग पर हैं. इस बार फिर से रन्स आएंगे. आउटफील्ड बहुत तेज है और अच्छा पंच किया था 4 रन के लिए. मुसलसल 2 चौके एंग्रो डॉल्फिन्स के लिए अच्छे लगे हैं ताहिर. ताहिर बहुत ही खूबसूरत खेलते हैं और बड़ा ऐसा लगता है इनके पास इजाफी वक्त है. ये देखिए ऑफ स्टंप की तरफ आए और
एक अच्छी लाइन और लेंथ वाले बॉल को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी महारत से फ्लिक किया गैप में, और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए इस गेंद को रोकने का। ताहिर को भी और एंग्रो डॉल्फिन्स को भी ज़रूरत है कि उनकी बड़ी इनिंग्स हो और एक अच्छी बड़ी पार्टनरशिप लगे, ताकि वो इस मैच में वापस आएँ। T20 गेम के अंदर एक अच्छी पार्टनरशिप आपको मैच में कहां से कहां ले जाती है। बेहद खुशगवार सुबह है इस मौसम सरमा की। आज सूरज में तमाज़त पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में ज़्यादा है, इससे जो सर्दी का एहसास है वो भी कम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अच्छी बॉलिंग किताब नहीं ला सकी टॉप ऑर्डर बैटिंग या एंग्रो डॉल्फिन्स की। आखिरी गेंद आने को है इस ओवर की, और बैकफुट पर जाकर इसे उड़ा कर रख दिया पॉइंट के बाहर, और ये 6 रन्स। गेंद बल्ले से टकराकर ज्यादा ऊंची नहीं गई, लेकिन हद पार कर गई इसके बावजूद। जी हाँ, बड़ा शॉट और बड़ा ओवर। 16 रन्स आए इस ओवर में, और एक शानदार शॉट बैकफुट पे पॉइंट के ऊपर से 6 रन्स के लिए। 30 पे 3 5 ओवर के अख्तिताम पर। अम्माद भट्ट ने 2 ओवर्स का बड़ा कामयाब स्पेल किया था 2 विकेटों के साथ, लेकिन अब उनकी जगह पर एक्शन में आएंगे वसीम जूनियर पवेलियन एंड से। तारिक भाई, अगर एक बॉलर जो कि 2 विकेट हासिल कर चुका है, ये वो शॉट है जो लास्ट गेंद के ऊपर पॉइंट के ऊपर से 6 रन्स के लिए खेला, और बड़ा डिलिबरेट इसको ऊपर की तरफ उठाया। अगर बैट का फेस आप देखें तो इसको ओपन किया है, ये देखिए ताहिर बेग ने, और शानदार टाइमिंग 6 रन्स के लिए खेला। अच्छा काउंटर अटैक किया इन्होंने इस ओवर में। तो अम्माद भट्ट जैसे बॉलर को आप अगर विकेटें ले रहे हैं तो पावर प्ले में आप यूज़ कर सकते हैं एक आध ओवर के लिए। यहां पर मौका है, और आ रहे हैं शादाब खान इस गेंद के नीचे। कैच आखिर में उनके लिए आसान साबित हुआ। ताहिर, जिनको आसानी के साथ बाउंड्रीज मिल रही थी, इस बार चलते बनेंगे। जी हाँ, हम अभी अमाद के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए सामने, बैटर्स का इरादा कुछ और ही है। 19 रन बनाने के बाद शॉट को फोर्स किया और ताहिर को जाना होगा। ये गेंद हवा में गई और शादाब ने आराम से इस कैच को लिया। टाइम नहीं कर सके इस स्ट्रोक को, और एक अच्छा कैच शादाब खान का। चौथी विकेट गिरी एंग्रो डॉल्फिन्स की 31 के स्कोर पर। जब एंग्रो डॉल्फिन्स ने 0 पर पहली विकेट गंवाई, 1 पर दूसरी, फिर 5 और 31 पर बेतरतीब तीसरी और चौथी विकेट गई, जो अखलाक को मैदान में ले आई है। जी हाँ, नए आने वाले बैटर इखलाक हैं जो कि अमूमी तौर पर ओपनिंग करते हैं, और यहाँ पर आज 6वें नंबर पे इन्हें आके फ़राइज़ अंजाम देना होंगे। 55 मैच, तकरीबन 1904 रन है,
1000 तक अभी नहीं पहुंचे और ये एवरेज भी इनकी पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं करती। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बड़े ही काबिल प्लेयर हैं, लेकिन इससे बहुत बेहतर हैं जो इनके स्टैट्स बता रहे हैं। बल्ले के बाहरी किनारे को लगती हुई गई, ये आज पहला मौका नहीं है, गेंद स्लिप से निकली हुई, 4 रन्स मिल गए अखलाक को। इससे पहले उमर अमीन खुशकिस्मत साबित हुए थे। जी हाँ, और तब भी 4 रन्स के बाद उन्होंने स्लिप को वापस बुलाया था उस पोजीशन में। ये देखिए एक अच्छा गेंद, और बैटर्स अभी तक इस पिच से संभल के खेल नहीं पाए इसके ऊपर, और ऐसे में मेरा ख्याल है कि शादाब को अटैकिंग कैचिंग पोजीशंस रखनी चाहिए। 4 विकेट्स ले चुके हैं, पावर प्ले के अंदर है, अभी भी कोई स्लिप नहीं आई है। ऑफ स्टंप के बाहर ही एक बार फिर उकसाने की कोशिश की थी वसीम जूनियर ने। ये देखिए दिफाई अंदाज में खेलते हुए उनको ये आउटसाइड एज लगा, और ये गेंद अगर स्लिप फील्डर होते तो एक आसान कैच था, लेकिन वही बात है कि सिचुएशनल अवेयरनेस, एक टीम जो है वो फंसी हुई है, उनके बैटर्स में वो एतमाद नज़र नहीं आ रहा, बॉलर्स जो हैं वो हावी है इसके ऊपर, तो अटैक करना चाहिए। और यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे, इनायत कर दी ये ओवर थ्रो की सूरत में, और इससे बेहतर ये मंजर नहीं हो सकता एंग्रो डॉल्फिन्स के लिए जब उनकी टीम मुश्किल में है। सरतपा बोनस रन्स मिल गए। जी हाँ, ये देखिए इस ओवर थ्रो का मंजर, अपने स्क्वायर लेग के ऊपर आराम से खेला, और इस असल में ये थ्रो ही वहां नहीं गई जहां पे जो फील्डर्स बैकअप के थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। असल में तो ये थ्रो मारने वाले के हाथ से गेंद निकला है और गलत डायरेक्शन में निकला है, सो इसमें बैकअप फील्डर्स का कोई कसूर नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि फील्डर जहां थ्रो करना चाहता है हाथ से गेंद उस तरफ नहीं जाती, और ये देखिए जाने क्या हो रहा है आज अंदर, जरूरत किस चीज की है और क्या अंदाज अपनाया हुआ है। वसीम जूनियर को इस ओवर में 1 विकेट और मिल सकती थी, शायद इससे भी ज्यादा, 40 पर 4। ये पहले पावर प्ले की झलकियां देखिए, ये विकेट गिरने का मंजर, शानदार बॉलिंग अमाद भट्ट की। उमर अमीन को इससे पहले एक दफ़ा स्लिप लगवाई, उसके बाद इन स्विंग के ऊपर आउट किया। ये वो मौका जो कि वसीम जूनियर ने गवाया। अली रज़ा की अच्छी बॉलिंग थी और कासिम अकरम को एक लाइफ मिली यहाँ पर। उसके बाद ताहिर बेग ने एक ओवर में काउंटर अटैक किया, कुछ अच्छी बाउंड्रीज लगाई, एक खूबसूरत छक्का, लेकिन यहाँ पहला ही गेंद खेल रहे थे वसीम जूनियर का और एक ऐसा शॉट खेल दिया पहले ही बॉल पर कि अपनी विकेट से हाथ धोना पड़े उन्हें। और उसके बाद फिर एक बार स्लिप लगी और खुशकिस्मत रहे इखलाक। तो 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और ये 4 विकेटें इस टूर्नामेंट में गालिबन पहली बार गिरी हैं। उसामा मीर आए हैं अब। अच्छा स्टार्ट, अच्छी जगह पर गेंद किया है, और अभी भी अगर एक स्लिप के साथ बॉलिंग करें, देखिए इस टाइम बैटर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर डालना चाहिए कप्तान को, थोड़ा इजाफी प्रेशर। और ये अच्छी गूगली उसी जगह पर जहां से पहला बॉल किया। उसामा ने चंद अच्छे स्पेल किए, किसी भी मैच में उन्हें ज्यादा रन्स नहीं दिए, और मिडिल ओवर्स में आकर वो विकेटें लेते रहे। इस बार 4 रन्स मिल गए, अखलाक को कट करने का मौका मैसर आया और उससे बिल्कुल बाज नहीं आएंगे।
थोड़ी सी जगह मिली है इखलाक को, बिल्कुल थोड़ी सी, कोई बहुत ज़्यादा बुरा गेंद नहीं था, लेकिन एक खूबसूरत शॉट और घास के बिल्कुल साथ लगा हुआ, अलोंग द कार्पेट जिसे कहते हैं। ये गेंद अच्छा है, जब भी स्टंप्स के अंदर बॉल को पिच करते हैं इस लाइन के ऊपर और अच्छी लेंथ से, वहां पे बैटर्स जो है उनको संभल के खेलना पड़ता है। एंग्रो डॉल्फिन्स का डगआउट जो है उसके मनाजर परेशान कुन है। बहुत ही बेहतरीन लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं और इस टाइम पे स्कोर कार्ड जो है उसमें सिर्फ 4 का हिस्सा दिखाई दे रहा है, लाइन के इस पार भी और उस पार भी। और अच्छी गेंद और उसामा का पहला ओवर अख्ताम पजीर, 44 पे 4। रमीज जूनियर को आज हैरान कुन तौर पर एंग्लो डॉल्फिन्स ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने पिछले मैच में, लेकिन इस वक्त ज़्यादा फिक्र जो है फ़हीम अशरफ को अपनी बैटिंग की होगी। जी हाँ, और ये वो बैटिंग लाइन है जिसमें फ़हीम अशरफ थोड़ा ऊपर भी खेल सकते हैं, थोड़ा फ्रंट भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और तकरीबन वो पिछला मैच सिंगल हैंडेडली जीतने जा रहे थे। तो शायद उनका खुद से ऊपर खेलना टीम के भी एतमाद में इजाफा करे और रमीज़ डिज़र्व करते थे, लेकिन शायद बैटिंग को बढ़ाने के लिए ऐसा किया हो कप्तान ने। हाँ, यही एक मुमकिन वजह हो सकती है। खासी तब्दीलियाँ होती रही हैं एंग्लो डॉल्फिन्स की टीम में करीब और साथ साथ पैंथर्स ने भी बहुत तब्दीलियाँ की हैं। कई ऐसी टीमें हैं जो नहीं तब्दीलियाँ करती। यूएमटी मार्कोस जो हैं वो तकरीबन एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। हुरैरा ने बहुत ख़राब शॉट खेला आज। जी हाँ, हुरैरा से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह का शॉट खेलेंगे, नॉर्मली बहुत करेक्ट खेलते हैं, लेकिन आज एक लेंथ बॉल को क्रॉस द लाइन खेले और खुमियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। ये अच्छा गेंद है और इसको सॉफ्ट हैंड से खेला है और सिंगल हासिल की। पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी और ये दोनों बैटर जो हैं वो कर सकते हैं, तजर्बाकार हैं। ऐसा लगता नहीं है कि इस्लाम ये जो लेक सिटी पैंथर्स की जो टीम है वो अटैक कर रही है कि और विकेटें ले ले। ऐसा लगता है कि वो खुश हैं रेगुलेशन फील्डिंग के साथ जो नॉर्मल स्टेज पे होती है। और इस बार पुल किया है कासिम ने गैप में, पूरा टाइम नहीं कर सके। फील्डर ने अच्छी कोशिश की लेकिन रोकने में नाकाम। 4 रन्स कासिम अकरम के लिए और एंग्रो डॉल्फिन्स के लिए। रिजवान महमूद थे फील्डर, अच्छा और तेज भागते हैं, अच्छे फील्डर हैं। ये देखिए इस शॉट का मंजर, पुल के ऐसे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था और शॉट मिड विकेट को बीट किया। बहुत अच्छा टाइम नहीं था लेकिन इतना अच्छा जरूर था कि फील्डर को बीट कर गया और 4 रन्स मिल गए। कासिम अकरम अच्छे बल्लेबाज हैं, शॉर्ट गेम को अच्छा खेलना जानते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि नहीं टाइम कर पा रहे हैं अपने। इनको बैकफुट पर खेलने में मुश्किल पेश आई है। मुमकिन है वैसी फॉर्म ना हो। कई बार एक अच्छी बारी जो है वो बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर देती है, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी टाइमिंग को फ़ायदा पहुंचता है उससे।
कासिम का कोई इतना स्टे नहीं हुआ अभी तक पिच पे, और इस वेदर में यहाँ पे टाइमिंग इतने आराम से होती भी नहीं है. 2 रन्स के लिए जाना चाहते थे लेकिन वापस आना होगा. अच्छी फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पर. 8 ओवर्स का अख्ताम और 51 पे 4 खिलाड़ी आउट. थोड़ा सीधा रही, बाट थोड़ा सा सीधा रही. Lake City Panthers have done well. 2 for Ahmad Butt, 1 each for Wasim Jr. and Ali Raza. Engro Dolphins, well, they're in a rebuilding phase now. Qasim was provided a chance. He needs to dig deep with the clock. Both can bat, but right now they have to be smart about how they will go about the remaining overs. Sam Amir. No, it's no foot movement, trying to nudge it down to third. Not a smart way to play a spinner. You always need to be proactive in the crease when you're facing a spinner, especially a leg spinner. And especially the quality of Osama Mir that he has. Tall, gets it right most of the time. That area that usually leg spinners like bowling. It's very economical always, and always searching for wickets. And that's a good attitude to have. Normally leg spinners do have that attitude. Always searching for wickets, regardless of the format they're playing. Clark just trying to deceive Osama Mir, but he's too smart and experienced for that. Current run rate 6.12. At some point they will need to accelerate, but probably for a couple of overs or probably till 10th or 11th, I would like them to just keep nudging around. Don't spare the bad deliveries. Reverse coming into play, and the fielders have done well to contain the boundary. Good morning. Wasim Jr. has woken up in the field. Dropped a sitter early on. This time he's done brilliantly well because he's got the shades on now. A little late, but he's got them on. Reverse swept it. A great effort. You need more efforts like this. Pushing hard for the second one. It's not available. 9 overs gone. Engro Dolphins are 55 for 4. He will be disappointed. Umar Amin, still the pads on. I cannot believe it because he's been given the opportunities. I believe over Suleiman, the young batter. That's why there is an added pressure of being a senior member. When a junior is sitting out and you're not able to perform, it adds up. Arafat Minhas is now being brought in attack. Starts off well, tossing it up on a good length. Well, yeah, and with Umar Amin, you would expect him because he's the senior pro. In the kind of situation he walked in, you would expect better of him, and he is better. But just probably the initial nerves and the pressure building was the one fault he was at and had to pay the price. Hence the result. Engro Dolphins are in. Oh, that was beautifully bowled. They're asking for it. Umar Siddiq is quite confident. More than confident. He's sure that he's got the man. The way he appealed and ran towards the bowler. He's been brilliant as far as wicket keeping is concerned.
Umar Siddiq. But what a good delivery it was from Arafat Minhas. Being referred to the third umpire, but let's see. You know, with the surfaces being reused, we've seen more purchase for spinners. And it was tossed up nicely. Just drifting in and then turning away. He's off balance for sure. Oh, that is going to be mighty tight. I think it's out. I think it's on the line. What a quick work. Great hands from Umar Siddiq. He's been a revolution as far as wicket keeping is concerned. I think he's got the man. Imtiaz Iqbal will have to make the decision. Yeah, he's on the crease. He's on the line. And we all know line belongs to the umpire. But it all depends on how Imtiaz Iqbal will make a decision. But what a delivery that was. Umar Siddiq was quite quick. Swift work from him. He's taking his time. But you can tell no part of that boot or the toe is behind line. But it's the umpire who matters. He's going to make the decision. But what a big moment this could be in the game. Qasim Akram was looking good. Still waiting. Still waiting. Well, he deserved that wicket. It was a beach of a delivery. Arafat Minhas. Qasim Akram had a chance early on. Let's see. Will he survive it or not? He's gone. Great work from Arafat to start off, and with Umar Siddiq finishing the job. Swift hands for him, and Qasim Akram gone on 14. More problems for Engro Dolphins. 5 down on 56, and it's time for drinks. Engro Dolphins were put to bat first by Lake City Panthers, and they are in all sort of troubles. Nothing has so far worked for them. 19 from Tahir, 14 from Qasim Akram, Ikhlaq on 17. Well,
courtesy to some brilliant bowling from Lake City Panthers. They've done well, especially the fast bowlers. Started off well. That's first one. Saidada Farhan trapped on crease by Ali Raza's incoming delivery. Poor shot by Herrera. The length wasn't there, trying to force it into the leg side. This was a brilliant setup by Ahmad, trapping Omar Amin on a fuller delivery. Again, on the up. The length wasn't there. It's not a sort of a surface where you can easily play those shots. And this brilliant work from Omar Siddiq, nicely tossed up delivery by Arafat, has caused more troubles for Engro Dolphins. Brave enough to toss it up again. Very smart he is, Arafat Minaz, and left arm spinners usually are. They're very clever. They know their areas. They can be very deceptive. And on the last delivery, it was a brilliant delivery, but the credit has to be given to Umar Siddiq for his quick hands. It's just amazing how he's transformed his talent in wicket keeping. Batting talent was always there, but wicket keeping is improved so much. And this is one example of him. Look at those quick hands. Blink of an eye and he's just done it. Brilliant. And he knew it. He was pointing towards the foot. So we've seen him do wonders. You have to give credit to Arafat as well, because today he's bowling with some air, quite slower in the air as well, getting that turn. 10 overs gone. Engro Dolphins 5 down on 56. हो जा बाट हो जा थोड़ा सा हो जा मोबी को कर ले थोड़ा सा बाहर Osama Mir. Good delivery. They're making full use of the conditions out in the middle. Tossed up and a perfect leg spinner. Doesn't get any tougher than this. As batters, two quality spinners operating, wickets losing, pressure of the scoreboard. Tough batting out there. Another one. Just enticing Clark to come onto the front foot and go for that expensive drive. And you can see how animated Umar Siddiq is. Full of confidence. Big turn from Mr. Mir. Well done. Reverse. It's uppish, but will be safe. It's just amazing, Marina Iqbal. One change can make such a huge difference. Early on, we saw Ali being brought into this side, Ali Raza, and he straight away got the wicket. What happened? He got the breakthrough, early breakthrough. The heads are down, rightly so. They haven't won a game in this tournament. Dolphins, they must be disappointed. But we're going to come back to the same topic. Ali Raza being included in the side. In the very first over, he got the ball to swing and got the big wicket of Saizada Farhan, who's been giving them a solid start early on, a couple of 50s in the previous games. So that's why it amazed me that previous two games he was not included. And certainly he's been included and he's made the difference straight away. No run there. Fahim Ashraf has been doing most of the scoring for Engro Dolphins. And you can say that till now in the tournament, you really can't blame the bowlers, because the way Engro Dolphin batters have been batting, their shot selection, there has been a huge question mark on how they've approached different scenarios as a batter and how they have selected poor shots to get out. Single down the ground. And that will conclude the over. 11 gone, Engro Dolphins 58 for 5.
सीमा लेफ्टी है. To follow up, Samin Gul, Shayan Sheikh, Salman Ishad, Ehsanullah, but it comes down to these two in the middle. That's Shiki. Might not pick a boundary or even a couple. This partnership, they need to be sensible about it. righty है. Yeah, partnership, it's very important. And an important phase also. Against two quality bowlers, Usama Mir and Arafat Minhas. Usually they both are on target, most of the deliveries. And once you have 5 wickets down, as a bowling side, you're high on confidence. You can tell the bowlers are giving the ball air, bowling in the right areas, not scared at all. Because the batting side is on back foot. This is what Usama did in the previous over, on target. And as you said, giving the ball air, which is much important as far as leg spin bowling is concerned. Usama is quite consistent, but I'm impressed by Arafat. He's being sensible. In the previous game, we saw that he came in, fired it, was quite quick through the air as well. But today, he quickly adjusted to the conditions and has more control and giving more air, tossing it up. That was a brilliant delivery, just drifting in and turning away. Oh, that was quicker through the air and given out. More troubles for Engro Dolphins. Again, a Clark trying to opt for the shot that is not going to work. Another poor shot attempted, which was not needed when you've got captain on the other side. You're already 5 down. There was no need of a fancy shot. He went for it and paid the price. Quicker one. Hitting the seam, that arm delivery coming in, hitting the back leg. Simple decision for umpire Asif, who was quick to give him out. 19 runs a Clark scored. 6 down on 61. Dolphins, 6 down on 61, 11.4 overs, and courtesy to some brilliant bowling all round. Firstly, the pacers taking the responsibility, and now the spinners are making life difficult. Shayan Sheikh, he walks back into the playing 11. Not an ideal situation for him, but good thing is he's got some runs against his name, a good strike rate as well, and captain on the other side. Good delivery once again from Arafat. This is the bowling partnership that has actually made trouble for Engro Dolphins. Have a look at that. I think even a Clark did not pick up the hand of Arafat. That has been the trouble for most of the batters. Great over. Just 3 off it and picking up another crucial wicket. 12 gone. 61 for 6. Very good change, captain. Well done, boy. Right arm bowling round for you. 61 खिलाड़ी आउट एंग्रो डॉल्फिन्स। ये टूर्नामेंट उनके लिए कोई अच्छा नहीं रहा अभी तक और आज दूसरे मरहले के आगाज पर पहले मैच में ही बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। बट बॉल पकड़ी बस। बट बॉलिंग पे बट। दूसरे रन के लिए वापस आ जाएंगे। बस सिर आगे हैं बॉलिंग क्रीज पर और फिर एक मर्तबा जिम्मेदारी आ गई है
कप्तान फहीम अशरफ पर। रिलैक्स नहीं होना यहाँ पे उनके सबने बॉक्स में भाइयों, मेरे साथ आ गए हैं सारे तरह मिलके एक तारिक साथ जाने सईद। दो, सामा को आने इससे दें। पहले बैरियर टाउन प्रॉपर्टीज, बैरियर टाउन की एक फखरिया पेशकश कि अब ये ग्लोबल होने जा रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास गेटेड कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं दुबई के साउथ में। और यहाँ अच्छा है मोबी, ये वाला अच्छा है। साउथ की जानिब सफर तेजी से जारी है डॉल्फिन। देखिए ना, छोड़ना नहीं है। आए लवली जामो, अभी मोबी आउट हो गया। नहीं बेबी, मुबस्सिर लेकिन अपनी क्रीज में पहुंच जाते। एंग्रो डॉल्फिन्स की विकेटें जो हैं ये मुतवातिर आए लवली जामो, आज अभी गिरती मोबी रही हैं। आउट हो गया। नहीं बेबी, ज्यादा तगदौर नहीं करनी पड़ी बॉलर्स को, इतनी ज्यादा संगीन गलतियां अराफात देखने में आई। थोड़ा सा इनको किससे हम ज्यादा मंसूब कर सकते हैं? क्या आज पिच का रवैया जो है वो अक्सर ऐसा बदल गया? मार ना कहीं पे भी, बंगोल यार खड़ा रह गया एक बार पहले। फिर एक रन ये यहाँ पर बन सकेगा। बॉलिंग ज्यादा नपीतुली हुई, उसकी ताब नहीं ला सके, या फिर जो है कुछ अपनी गलतियां ज्यादा संगीन थी। कहते हैं ना कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानो मरंदा शौक हुई सी। ज़्यादातर तो ऐसा लगता है कि सुसाइडल बैटिंग की है, जो स्ट्रोक्स चूज़ किए हैं, जो ऑप्शन इख्तियार किए हैं, बहुत ही मायूस कन रहे हैं। चिप किया है एक रन के लिए कप्तान फहीम अशरफ ने। अगले ओवर में वही सामना करने के मजाज होंगे। यहाँ पर 13 ओवर्स के बाद 66 पर 6। आज के दिन एक ही मैच खेला जाना है और अभी तक खासी मायूस कुन तस्वीर सामने आई है एंग्रो डॉल्फिन्स की बैटिंग की। मिर्जा ताहिर बेग ने 19 रन बनाए, अखलाक ने 19 रन बनाए। दूसरी जानिब इत्मीनान है, अरफात मिनहास जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की वही अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। ये दोनों जो हैं इनमें बैटिंग करने की अहलियत है। शायान फहीम ये दोनों जो हैं बॉलिंग ऑलराउंडर ख्याल किए जाते हैं यहाँ से, क्योंकि T20 का मैच है। तो शाह फैसल साहब यहाँ क्या सोच होनी चाहिए कि T20 के अंदाज से ही ये बाकी मांदा 7 ओवर्स खेलने की कोशिश की जाए, या फिर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि 20 ओवर तक इनिंग्स जो है उसको लेकर जाना? इस वक्त तो पहली कोशिश यही होगी कि जितनी बाकी मांदा गेंदें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और फिर कुछ करीब जाकर ऐसी स्टेज पे जाया जाए जहां से ये बड़ी हिटों की जानिब जा सकें। अभी भी जाहिर है अगर इन्हें गेंद मिलती है तो उन्हें ज़ाया नहीं करनी होगी, लेकिन काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। जिस तरह के हमने इस पिच पे बैटिंग देखी है पिछले 2 दिनों में, बड़े बड़े स्कोर बने। मुझे नहीं लगता कि पिच की हालत इतनी ख़राब है जितनी ये स्कोर बोर्ड आपको इस वक्त दिखा रही है कि 68 पर 6। तो यहाँ से कोई आसान काम नहीं है इन दोनों बैटर्स के लिए। अच्छी हिट लगाई, फील्डर थे स्क्वायर के सामने, लेकिन इतना नहीं कि गेंद तक पहुंच सकते। निस्बतन शॉर्ट गेंद थी और इसे देखते ही आंखें बड़ी हो गई फहीम अशरफ की। इसी तरह की मजीद बैटिंग की ज़रूरत होगी एंग्रो डॉल्फिन्स को। थोड़ा सा ये बॉल पड़ने के बाद बाहर निकला, वेरिएशन बॉल थी अरफात मिनहास की। शायद ये नई बॉल वो डेवलप कर रहे हैं जो बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर के लिए। गेंद बाहर को निकली लेकिन लेंथ छोटी थी, इसलिए फहीम ने फ़ायदा उठाया। इस बार कमजोर शॉट खेल गए और ये विकेट आएगी और ड्रॉप कर दिया रिजवान ने। ये अच्छे फील्डर हैं
इस बार लो कैच नहीं ले सके, खासा दौड़ कर आना पड़ा था। बाउंड्री से हैदर अली की जगह पर फील्डिंग कर रहे हैं इस वक्त। रिजवान अच्छे फील्डर मशहूर हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी फील्डिंग का वो मयार नहीं है जो उनसे तवक्को की जाती है। पहले भी कैच ये छोड़ चुके हैं और ये भी बिल्कुल रेगुलेशन कैच था। ऐसी टेक्निक जो किसी यंगस्टर्स को नहीं अपनानी चाहिए जब आप ऐसा कैच ले रहे हो। काफी नीचे चले गए थे और अपने घुटनों पर, वहां से रिकवरी मुश्किल होती है। ओवर का इख्तिताम हो गया, वापस आकर देखेंगे ये कोशिश रिजवान की। 14 के बाद 74 पे 6। इस इनिंग्स में 28 गेंदें खाली गई हैं। दरअसल 37 गेंदें खाली गई हैं और सिर्फ 2 चौके लग सके हैं इस पूरी इनिंग्स। यहाँ पर रिवर्स स्वीप कर दिया। अच्छा शॉट खेला शायान ने 4 रन्स के लिए। अच्छा ऑप्शन मुंतखब किया शायान ने। लेग स्पिनर ओसामा की गेंद उनको छोड़ते हुए जा रही थी, ये कनेक्शन अच्छा था। इस तरह की शॉटें जितनी आप ज्यादा से ज्यादा देख लें, उसमें कामयाब शॉटों की वजह वही होती है कि जब आप पोजीशन में जल्दी आ जाएं। बैटिंग करने की ये है सलाहियत इस्लामाबाद के लिए। इस साल शायान जब कायदे आज़म ट्रॉफी भी खेले थे तो वहाँ ये हाथ बटाते रहे थे अपनी बैटिंग लाइनअप का, खासी मदद की थी इन्होंने इस्लामाबाद की टीम की, क्योंकि इस सीज़न में टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है उसको चैलेंज रहा है पेसर्स का। लाइन में चूक गए ओसामा। जी हाँ, डिफरेंट बॉल यूज हुई इस दफा कायदे आज़म ट्रॉफी में और ज़्यादातर मैचेस यहाँ शुमाल की जानिब खेले गए। ग्रासी पिचेस थी, बैटर्स का काम मुश्किल था यहाँ। गेंद ज़्यादा टर्न हो गई, आखिर में पैड को लगती हुई गई। अंपायर ने थपकी दी अपने घुटने को। ये वो ड्रॉप कैच है रिजवान का, अगर आप देखें तो कितने वो लो चले गए थे, बिल्कुल भी बैलेंस पोजीशन में नहीं थे। अच्छी टेक्निक नहीं है, गेंद के नजदीक जल्दी आ जाना चाहिए और कम से कम वेस्ट हाइट या ऊपर अगर मुमकिन हो, और ये आउट हो जाएंगे। ये हुआ क्या यहाँ पे, शायान पहले पहल तो अपनी क्रीज से नहीं निकले, लेकिन शायद उन्हें लगा कि बॉल निकल गई है और इसके बाद वो क्रीज से निकले तो उमर सिद्दीक ने उन्हें चलता कर दिया। अच्छा, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स वहाँ देखने को मिली। पहले कॉर्ट बिहाइंड की अपील की थी उमर सिद्दीक ने। उस वक्त तक पांव जो है पूरी तरह जमा हुआ था शायान का बैटिंग क्रीज के अंदर। और यहाँ जाहिर है कि फैसला दिया जा चुका है पहले ही, इसमें तो कोई शुबा नहीं था। तो शायान जिनने इस ओवर में एक अच्छा रिवर्स स्वीप लगाया था, वे अपनी गलती से आउट हुए और यहाँ इनका ख्याल था गेंद निकल गई है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, शायान को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। 7 पर आउट हुए, 81 पर 7 एंग्रो डॉल्फिन्स। शायान शेख रन आउट हुए।
और अब 2 स्लिप्स खड़ी की हैं शादाब खान ने। लेग स्पिनर की अभी भी एक गेंद बाकी है। बिल्कुल दीवार के साथ डॉल्फिन्स की बैटिंग लगी हुई। बैटिंग की भूल भुलैयों में खोई रही है और ये तो बिल्कुल खो गए थे शायान शेख। इनने गेंद खो दी थी। और ये शायान का जो डिसमिसल है ये बिल्कुल आपको जाहिर करता है कि किस किस्म का दिन रहा है एंग्रो डॉल्फिन्स के लिए। उनकी बैटिंग भी इसी तरह सोच में गुमसुम और हालात से नावाकिफ। 15 के बाद 81 पर 7। Bowling over है. Left arm over. बहुत कम ओवर्स आपको डबल फिगर के दिखाई दे रहे हैं। यही पे ले, खुद ही ले। तो आज थोड़ा सा बाहर कर ले बस। पिच से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पास आ जाता है। पहले सीम मूवमेंट ठीक भी है। थी, उसके बाद जो स्पिनर्स हैं उनकी गेंद टर्न भी हो रही है, पकड़ भी है पिच में, क्योंकि इस विकेट को आज मुसलसल दूसरे दिन इस्तेमाल किया जा रहा है। पक्का हो रहा है, पक्का हो टूर्नामेंट रहा में है, पहला एक जरा मैच देखते हुआ हैं। यूएमटी मार्कोर्स, शायद 128 चेस कर रही थी, कामरान हमें बताएंगे, और वो काफी मुश्किल से उस हदफ तक जा पहुंचे थे। लेकिन यहाँ तो 100 रन करने के भी लाले पड़े हुए हैं एंग्रो डॉल्फिन्स को। ले शादी शादी यहीं पे। लवली शादी, गुड एफर्ट यारा। अच्छी एक्सीलेंट शॉट, फील्डिंग एक्सीलेंट शॉट। शादाब खान की स्ट्राइक पर उन्होंने रखा फहीम अशरफ को। शाबाश शाबाश अरफात। ये आखिरी अब चंद गेंदें रह गई हैं यहाँ अरफात के ओवर की। क्या फहीम जो हैं ये हाथ उठाएंगे इन पर? लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का जो आखिरी ओवर होता है, अगर बाएं हाथ का बल्लेबाज वहाँ मौजूद हो तो खुद को रोक नहीं पाता। कुछ ये भी होता है, बॉलर्स भी अपने स्पेल के आखिर में थोड़ा सा लालच करते हैं, विकेट के लिए जाते हैं, यहीं पे लेगा मोबी, नहीं मौका देगा। देंगे बॉल छोड़कर करने को, फहीम को दावत देंगे। जल्दी से बचा लें, एक गेंद ही रह गई है अब, अभी तक 5 डॉट बॉल हैं इस ओवर में। अपने अंडर 19 दिनों से वाकई लगता है कि अराफात जो हैं ये बड़े हो गए और ज़्यादा एक मंझे हुए बॉलर लग रहे हैं। बेहतरी की जानिब गामजन है, ये अच्छा लग रहा है देखकर। 16 के बाद 81 पर 7। That's a sensational spell of bowling. 4 overs, just have 11 runs and a couple of wickets for young Arafat Minhas. 16 dot balls, and you can tell how Dolphins have played against it. Very defensive on the back foot, looking to defend almost every delivery. Shadab didn't bowl in the previous game. Starts off with a short one, been hit straight to the fielder. Just 1 run. Osama Mir is down. Former captain Salman Butt alongside me. Thank you, Ali Yunus, and I hope there's no damage done. But by the look of things, it seems as if he's been struck on one of his fingers, maybe. Or this was a chance, and should have been a straightforward chance, but I think it has hit his hand or maybe the thumb. And he's down in pain, and a concern for the Lake City Panthers as the doctor comes in. How would you, Ali, describe this innings of Engro Dolphins so far as the doctor checks, and we shall know in time what has happened? What do you make of this innings? I think irresponsible is the word. The way the batters have batted in this inning, just throughout the tournament, not just in this inning, Salman. Nobody has really taken the responsibility and played for the team. Osama Mir was hit earlier on the same hand. First game of the tournament.
But this is what they've done. The drop chances, they've been pretty ordinary. There's one. Sorry, Wasim Jr. and this one should have been taken. Both of them actually should have been taken. Quite simple chances. This one, the quickest of them all. Osama Mir. It's 82 for 7 and it's 3 chances dropped. And all 3 were regulation chances. The one to Wasim Jr. was schoolboy stuff. And the mistake that he made, you do not expect from an international cricketer to be like that, as this one has been smashed. Fahim Ashraf has some form and he has been smashing balls outside the boundary in the previous games as well. And as soon as he gets the chance, he hits one from Shadab into the nets on mid-wicket. Have a look at this. Drop shot and then you are at the mercy of the batter. This one has been swept fine and no timing. I think it was off the pad. And maybe bat and pad because there is no signal from the umpire. Faisal Afridi there. But in a tournament where everything has gone wrong for Dolphins, Fahim Ashraf had stood alone as a batter. And as you were mentioning in the previous stint, that he could have promoted himself up the order. To me, Salman, I think the onus goes to Umar Amin and Salman Irshad. I think these two senior members, they had to stood up. They had a bad tournament. I think that's why they did not get that combination right. The youngsters were supposed to play around them. But Umar Amin and... Oh, close, no, pitching outside the leg stump maybe. So I guess once these two senior members didn't do well, others struggled. Yes, it's always the onus onto the experienced members of the side to carry the burden mostly, and the new ones can play around them. As you see, this one pitching way outside the leg stump, no chance of leg before, but certainly an opportunity missed to hit another big 6, half tracker. And Shadab in this over has been almost every delivery has been half tracker. 17 gone, it's 92 for 7. Wasim Jr. is back now. We haven't seen Ahmad Butt back. 2 overs he bowled up front, picked up the first 2 wickets, bowled brilliantly, swung the ball, gave away 9 runs only. And Wasim Jr. is also picked up a wicket, 17 of his 2. That is what he gave. And he's back with his 3rd over. Now I wonder, it's 3 overs to go in the innings. And we'll come back to the overs. It's a Barrier Town time at the moment. The Barrier Town properties, they go global. And they are developing a world-class gated community in Dubai South. And they're also the leading sponsors of this tournament. Champions Cup, Barrier Town Champions Cup T20. So coming back to our point, the best bowler of the day will not bowl his full quota. How do you justify that? This has been cut and cut hard. Fahim Ashraf is good with short balls either side. And the fielder was Bangalzai, did a good job. So there's been quite a few things that if you just sit back and think, you would say this can be done better. There were occasions, there was 5 for 2, then there was 1 run for 2 wickets and there was no slip. And twice the ball went through the slip cordon. So sometimes it's more errors than just the conditions to blame. And even the batters, the shot making that we saw today, their modes of dismissals, I think the coaching staff would not be happy with them.
96 for 7. The lowest being 123 by Panthers against Lions. 126 Lions against Panthers, so they've just leveled up things there, up the order. 128 by Dolphins. Sharp one. That has been a comical game. Missed chances, captaincy question marks earlier on, just as you said, no slips. And the batting, the dismissal, I think Dolphins, they've just not got it right. Yeah. But the question that I had was, the major question was, Ahmad Butt being the best bowler today will not be able to complete his quota. Whereas he picked up 2 wickets, it was 1 run for 2 wickets. And then there was a change in the bowling. He's appealing for it, and the umpire says, yes, it's hitting the stumps. Sameen Gul this time. Wasim Jr. coming into the attack again and getting the wicket. It's been all Panthers this morning and afternoon. No problems with the front foot, and wrapped in front of the stump, Sameen Gul trying to go across the line, and a straightforward delivery, a straightforward decision for the umpire. Sameen Gul leaves for 4, and it's 8 for 96. A Dolphin supporter maybe not in a good mood, and rightly so. On paper, Salman, they look like a fine T20 side, but it just has not worked. The combination, they've not been able to get the combination right. 42 runs for Salman Irshad. They've almost, every game they made changes to their side, trying to find this best 11. Beaten. So close he was again. 18 gone, 96 for 8. The lone warrior, Fahim Ashraf, the captain of Dolphins, still there on 23. No support whatsoever from any other batter. Akhlaq looked good for 19, gave it away, poor shot. Tahir again looked good for 19, gave it away, poor shot. Qasim Akram also 14 runs and remaining. Just couldn't get to the double figures even. That is the reason they're 96 for 8 in 18 overs and are on the verge of being bowled out of the lowest score of the tournament. He will be a disappointed man because he's such a fighter. He's been whenever he's used to play. But here, being a mentor, being a coach, he couldn't do much. Sarfraz Ahmed, Salman. We saw Shoaib Malik playing mentor, play the game. Maybe bring him in the next game. Why not? Well, this is an appeal and a question asked, but no response. Maybe down the leg side. Ahmad Butt bowled beautifully up front with the new ball. He was swinging the ball, hitting the pads, getting the edges. And one of his wickets was a shot which is difficult to comprehend. I have not seen Herrera play a shot like that. It was a foolish length and he went across. Clearly, once again pitching outside leg. You can't be given out leg before wicket if the ball has pitched outside the leg stump. Simple as that. For any aspiring cricketers, you do not appeal
as this one is cut, but there's deep point. Fahim Ashraf looking for two, but it wasn't there. Once again, Salman Irshad will have to face. So it's been a innings which has never got going from Engro Dolphins. Despite their batters getting chances, catches being dropped, still no different. It's Sajid, the lion-hearted Sajid. What a wonderful test series he had against England. He bowled well along with Noman Ali. They were brilliant with the ball, with the bat, and the experience showed. And the English batters had no clue how to answer them. And after a long time, I think Pakistan went back to their own formula of having spinning tracks and creating difficulties for the visitors who are not used to such conditions. And I think that was certainly the way to go, and much appreciated those initiative that was taken to make those wickets. Remember, this was the same ground where Pakistan had so many test matches which, you know, they didn't play to their liking. The pitches were not to their liking. So fantastic job that, and great response by the two senior spin bowlers. This one is a full toss. It's flicked, and the umpires, no call from them. So Fahim is back on strike. Yeah, I would like to add another 20 runs if he can. Fahim Ashraf, 8 deliveries to go. Certainly he can get those 20 runs and get the total to somewhere 120 if he's able to do that. Still might not be enough, but at least some chance. Slower one, leg spin action. Ahmad Butt has been brilliant. May it be the new ball, may it be the old ball, may it be the variations. He's been spot on. And so is this man on your screen, Umar Siddiq. He's just been fantastic. Leave the batting, but as a wicket keeper, he's been just superb. Slower one again. Well dealt with. Fahim Ashraf will keep the strike for the last over. 99 for 8 after 19. Last over, guys. Six deliveries in bowled by Wasim Jr. 2 for 21 in his 3 overs. 99 for 8 at the moment. Fahim Ashraf, the captain, he will face, and ideally for them, he should be facing all 6 deliveries and try to get to 115 to 120. Can they get it? That's the question. Third inside the circle. There's a long off, long on, deep in wicket, deep square leg in place for the last 6 deliveries to be bowled by Wasim Jr. It's through him. It's bowled him. Beautiful delivery. Cannot blame Fahim Ashraf. He had to go big. It was on target and timbers for Wasim Jr. Yes, another one bites the dust. Another swing across the line. The replay would tell us whether this ball could have been played in some other area, but Fahim Ashraf taking the option of mid-wicket. Yep, he thought the ball was there, but it just kept a touch low, I think, and he missed it. 25 he got of 34, and I still believe that he could have batted up the order, seeing his form. It's 9 for 99.
They're all excited because Ehsanullah is on crease. But he's there with the bat in his hand, not the ball. He gets them excited. 9 runs in his career. A chance for Wasim Jr. to make it 4 wickets. As Ehsanullah gets ready and smashes this one. He has other ideas. He's asking us, what are you talking about? Great start this from Ehsanullah. Wasim Jr. and the rest of the Lake City Panthers taken by surprise. Have a look at this. Smash. Where has he been? Now I know why those kids were excited. Maybe they know something which we don't. The talent of Ehsanullah as a batter. He had no option just to go after it, just whack it around. Can he repeat that? That's the question. Very fast bowler-like response. Wasim Jr. And we all know fast bowlers, they don't like getting hit over the top, and that too by another fast bowler. Ehsanullah once again closing the eyes and swinging the bat as hard as he can. This time no luck. It's gonna be either a slow one or a yorker. What do you think? That was pretty early, this call. It's just when I heard you, I said it. But Wasim Jr. was on target the previous occasion when he got the wicket of Fahim Ashraf. On target, length delivery, hitting that off stump. You really can't blame Fahim Ashraf. He had to go big. He had to get maximum runs for the side. And he lost his wicket in doing so. But now, the responsibility is on Ehsanullah. Oh, he's shadowing, practicing those ramp shots. Interesting. Very interesting. Inside edge will at least get him 1. Wants to come back for the second, wants to have the strike back. Ehsanullah, always animated, always involved. It's time for Sarfraz to play, I guess. Yes, he'll be trying to sort out the issues that he might have noted in the side, be it be batting, bowling, fielding, playing 11 combinations, different things. As last Rivley comes up, and it's another inside edge. This time it goes finer, and the batters are running back for the couple, and that's all they will get. And as these 20 overs come to an end, the innings is closed at 106 for 9. Engro Dolphins, certainly not what they were looking for, but a top performance in terms of bowling for Lake City Panthers. Not the best in the field, but the bowlers doing a perfect job. Absolutely, they were brilliant. And this is what one change can do to your bowling unit. Brought in Ali Raza, who got the big wicket of Sabzada Farhan early on in the first over. And after that, all the other bowlers were all over the Dolphins. He will be a very satisfied captain, Shadab Khan, with the changes he's made, the way the bowlers have responded. Although still question marks as far as catching is concerned, but still overall a very disciplined performance in both departments by the Panthers. And going into this half time, they will be a very satisfied team because they know they've done one part right. All they need to do is finish it well. This Engro Dolphins batting card, a disappointing one. Saibzada Farhan didn't disturb the scorers. Tahir Beg looked good for a moment and then played a fancy stroke in the air and was caught. Herrera came in, and I don't know what to say what he did. Picked the wrong length maybe. Umar came in at number 4 and he got only 4. Qasim 14.
Despite getting the chance, he couldn't progress. Akhlaq came in and opted for a stroke, which just wasn't there. Fahim once again, the highest scorer, 25 of 34. Shayan was run out, and I think it was a brain fade. He didn't know where the ball is. Sameen was LBW, and the last two batters, well, they stayed not out, and it's 106 in the total. As the bowling card for the Lake City Panthers is that Ahmad Butt picked up 2 wickets earlier on. Ali Raza picked one, both bowled brilliantly. Wasim Jr., 4 overs, 28 for 3. All 3 fast bowlers among the wickets. Osama Mir, very economical, but no wickets. And Arafat Minhas, the economical of them all. 4 overs, 11 runs and 2 wickets. Right, Shah Faisal is down there with the very smart Arafat Minhas. थैंक यू वेरी मच अली यूनस मेरे साथ मौजूद हैं अरफात मिन्हास. बहुत अच्छी उन्होंने आज बॉलिंग की, इकोनॉमिकल बॉलिंग, और गेंद को टर्न भी कराया. वेल बोल्ड अरफात, बहुत अच्छा स्पेल रहा आज का. कंडीशंस कैसे पाई आपने? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि स्पेल मेरा बहुत अच्छा था और हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, जितने हम लोग स्पिनर्स जो थे. तो जैसे उसामा भाई ने मेरे से पहले बॉलिंग की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह बॉल स्पिन हो रहा है और इस पेस से हो रहा है. तो हमने कंडीशंस को अच्छा यूटिलाइज़ किया और मेरी कोशिश यही थी कि मिडल ओवर्स में कंटेन बॉलिंग करूं और अच्छी एरियाज़ में बॉलिंग करूं, और सपोर्ट मुझे पिच से मिल रही थी. तो मेरा अपना माइंड यही था कि मैं विद इन द स्टम्प्स और टर्न जैसे कि हो रहा था तो अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग की, जिससे हमें फ़ायदा हुआ. और आपके टैलेंट के बारे में ज़ाहिर है हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में आप खेल रहे हैं, आपके साथ इंटरनेशनल स्पिनर्स हैं, उसामा हैं, साजिद हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कैटेगरी के स्पिनर्स हैं. आपस में बातचीत होती है आप तीनों स्पिनर्स की? जी बिल्कुल, हम लोग हर मैच के बाद एनालिसिस करते हैं कि कंडीशंस किस तरह की हैं और किस तरह हमारी बॉलिंग चल रही है, और हम लोग आपस में जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं हम लोगों को हेल्प मिलती है, और हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, तो इससे हम लोगों को हेल्प भी मिलती है. और हम कोशिश करते हैं कि मैच के दौरान भी कम्युनिकेट करते रहा करें, क्योंकि उससे एक बॉलर को कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और जल्द अज जल्द हम कंडीशंस को एनालाइज़ करते हैं, क्योंकि T20 गेम है, इसमें इतना टाइम नहीं होता. तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जल्दी एनालाइज़ करें. और आज आपकी टीम कंप्लीट कंट्रोल में थी. एक लगा कि वैरायटी, आपने लेफ्ट हैंडर को बॉल बाहर भी निकाला, वो कोई नई चीज़ है या हमने पहली दफ़ा देखी? जी बिल्कुल, वो मैं काम कर रहा हूँ उस डिलीवरी पे, लेकिन अभी उस पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है. लेकिन आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूँगा कि इस पर ज़्यादा महारत हासिल करूँ ताकि ये इफेक्टिव हो. चलें, आज आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की. वेल बॉल्ड एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. That was Arafat Minhas, and back to you guys upstairs in the comm box. Thank you very much, Shah Faisal. Right, Engro Dolphins started off very poorly. This was first over. Ali Raza getting the best of Sabzada Farhan was LBW. Then a very, very poor shot by Huraira. Umar Amin, lot was expected of him. Started off nicely, got the chance to. Then this in-swinger from Ahmad Butt hitting the wicket of Umar Amin. There was some chances given to the batters, courtesy to some very poor fielding. But they kept giving the chances, they kept hitting the big boundaries. They kept hitting those and losing the wickets too. Well, the fiasco never stopped for the Engro Dolphins. The wickets kept falling and the bowlers kept on bowling well. They were never really put under any sort of pressure. No partnership, no innings of big magnitude. Some shots, yes, obviously, going in the gaps, getting the boundaries. And other times it was all bowlers dominating. And look at the shots. I don't know how to describe them. Wrong choices and paying the price for that. The team getting only 106 runs, courtesy irresponsible shot selection. The bowlers just kept on going, and look at this brain fade as well. Didn't know where the ball was, kept running. Another leg before, Sameen bowled this time. And the umpire taking no time rather. This was another one, was clean bowled. Wasim, and in the end Asanullah smashing one and getting a couple of the last delivery to finish the innings at 106. Right, Lake City Panthers need to chase down 107 runs at 5.35. This is the lowest target by a team in this tournament. That shouldn't be a problem. When we come back, we'll have run chase ready for you. And the finger's finally gone up. Bowled him.
Off cup goes flying. Ahmad Butt boxing Umar Amin with the in-swinger. Or is it Wasim Jr.? Oh, that was quicker through the air and given out. More troubles for Engro Dolphins. यहाँ पर रिवर्स स्वीप कर दिया, अच्छा शॉट खेला शायान ने 4 रन के लिए। और ये आउट हो जाएंगे। This one has been smashed. Fahim Ashraf has some form. He's appealing for it, and the umpire says, yes, it's hitting the stumps. Hello, hello, check 1 2. Hello, hello, check, check. भाई ये भी 3 कैमरे चेंज कर लिया, बता क्या।
Good afternoon and a very warm welcome back to the Rawalpindi Cricket Stadium. Match number 13 of Barrier Town Champions Cup T20. Lake City Panthers taking on Engro Dolphins. Well, what an early afternoon we had. Engro Dolphins were struggling in this championship. Today really summed up their efforts. This kind of batting performance. Just 19 there for Akhlaq, 25 for Fahim Ashraf. Qasim Akram and Tahir also getting into the double figures. But this is not a happy reading if you're an Engro Dolphins fan. A paltry 106 for 9 in 20 overs. These are the wickets. The rot was started early when Ali Raza knocked over Sabzada Farhan. Herrera should not be watching these replays. Omar Amin was trapped brilliantly by the experience of Ahmad Butt. Tahir Beg followed suit. No partnership of any note. It was soon 56 for 5. This was another sloppy dismissal. Wickets kept tumbling. Akhlaq hung in for a while and Shayan. This is really comical stuff. It was way too much for the lower orders. Amin Gul trapped right in front. Fahim Ashraf was castled in a spectacular fashion by Wasim Jr. Clinical performance by Lake City Panthers, especially bowlers. Wasim Jr. with 3, 2 for Arafat has been economical. Look at that economy, 2.75. And Ali Raza, who started everything with the first over, picking up just 1. But he was the one who set the tone up. Well, Lake City Panthers will require only 107. This is the lowest first innings total in this year's Barrier Town Champions Cup. Umar Siddiq is already in the middle. He's been in decent nick in this tournament. He's really featured heavily in some good partnership at the top of the innings, and also with Haider Ali, who's batting 1 down at average of 21 and strike rate of 114. These stats are on the way up from the beginning of the tournament, where he was averaging below 20. Well, Abdul Wahid Bangalzai is also a very exciting talent. Featured in the first game of the championship, but then was benched 35 games, 21 years of age. A long way to go for this youngster. We've seen plenty of turn, so no surprises here to see Qasim Akram. Yeah, Qasim Akram, he's amongst the wicket takers this season, and with Umar Siddiq, the left-hander, on strike, I think it's a good ploy. We've seen bit of turn, bit of purchase for the spinners. Arafat, Usama Mir managed to get something out of the surface, and that's exactly what Qasim Akram would be looking. And also Fahim, early breakthroughs, and you never know that this total can turn up to be an exciting game of cricket. Already had one low-scoring thriller. Qasim goes past the outside edge immediately. 128 that were made by Dolphins in one of the earlier games. UMT Markhors got over the line with 8 wickets down and in the 19th over. Can Engro Dolphins do it again? Take this game closer. This again looks like it came off the shoulder of the bat. Umar Siddiq with low hands. The key is to change the pace, give some air and allow the ball to turn off the surface. Qasim Akram, he started off well. And also I'll ask you this, Marina. Long off his back with so few runs. Would you just bring him in and tempt the batters to go over the top and take a chance? Well, no, probably Umar Siddiq would be looking to punch down to get that single, and in doing so he might get an edge, so that isn't a bad ploy, just forcing and giving an open area, inviting the batter
to go for that shot just off the front foot, trying to hang the bat away from the body. So it's not a bad ploy because right now they won't be going for bigger shots. Bangalzai now on strike. Interesting. He's got 4 fielders on the onside. Extra fielder coming over across to point. Mid-off is up in the ring. Long on and mid-wicket are back. Turn, but the line wasn't right. Turn is what Qasim Akram is looking for. Slightly start probably from off stump or 4th stump and try to bring the ball back into Bangalzai. Bangalzai is replacing Sharjeel Khan. Must be under a bit of a pressure. At this level, you got to perform almost instantly to keep your place. So much competition for places. He will be off the mark now, looking to come back for the second. We'll close out over number 1. Lake City Panthers 4 for none. Crowd is still there. Sharjeel Khan wasn't a part of playing 11. Bangalzai given a chance. It's not an easy surface, but should be aware of it. So mean goal now. We'll share the new ball with Qasim. 3 for 23, Samir Gul's best bowling figures in this championship. This is his only spell of bowling where he returned with wickets. Other than that, he's bowled well in patches. Not much wickets to show for in other 3 outings. Little bit of swing, but beautifully played. This is exquisite from Umar Siddiq. That's the kind of form he is in, Umar Siddiq. He'll always put away those poor deliveries if offered. And Sameen Gul pitching it up, looking for that swing. But the line and length wasn't good. Playing right underneath the eyes. Good balance, steady head. And wrist coming into play. That's a classical shot from Umar. Oh well, straight to the fielder. Shayan taking the catch. Umar Siddiq cannot believe what he's done. It was there for the taking, shot of length, but he hit it straight to square leg. Yeah, he being the keeper, you would expect from him to understand the sort of surface he's playing. We've seen that the shorter ball has made and created trouble for batters. Again, just into the shot quite early. Sameen dragging it short. Couldn't really time it. It did grip ever so slightly. And that's why couldn't really time it or get the elevation. Back in the hut now, Umar Siddiq on 5. 1 down for Lake City Panthers on 8. Shadab Khan. Average can go up, but we've mentioned this before. He's played on various numbers. Here batting at number 3. He can really spend some good time in the middle going towards the business end of the championship. Not a daunting run rate at all.
the required run rate. Samin went for the outswinger, lost it completely. Well, Shadab is here because Umar Siddiq was dismissed. Just very interested to see, look at how his feet were at the point of impact. No balance at all. The weight shift wasn't there. And in the end, he just flapped at it and it went straight to Shayan. Just need to be careful of what shots they would select. Shadab, he also likes to stay on back foot, likes to slam it hard. There's been some purchase for the spinners, but also pace bowler, whoever is dropping it short, has caused problems. So just need to be careful and probably delay your shot slightly and get on top of the bounce. And gone. A second ball duck to Shadab, following the first bowler that he had in the previous game. Back-to-back ducks for the Lake City Panthers skipper. Wider delivery, no commitment to the shot, just a prod and held comfortably. Yeah, that's the nature of Shadab, just throwing away his bat. No footwork whatsoever. That delivery should have been gone towards the boundary, but look at that. Just stand and deliver, slight forward punch, way outside off stump. There was no transfer of the weight. And again, just hanging bat outside off stumps. The captain has gone on not. Troubles for Lake City Panthers, 2 down on 9. Samin Gul. That was a lucky delivery for him. Normally, when you look at from a batter's point of view, should have been a boundary. But now Mubassir walks in all sorts of trouble. Engro Dolphin pacers are also making sure that he use the big good length. Just again hanging on the back foot, allowing the ball to come close to him. But have a look at that. Irresponsible shot. Look at Shadab, the way he broke his wrist. That's why I said no commitment to the shot. Have a look at that. That bat flapping in his hand. Sabzada Farhan is a very, very good slipper. Hangs on for dear life. But Shadab will really have to go back to the drawing board. He got a first bowler in the previous game, caught at mid-off. Successful over for Samin Gul after 2 Lake City Panthers, 9 for 2. Sanullah. Good to see him back. He bowled 2 overs in his comeback game. Another opportunity. That experiment of Qasim Akram only lasted for 1 over. Width smashed away. What a shot from Abdul Wahid Bangalzai. He announced his arrival. That's the way to do it. Bangalzai. He's got a good head on his shoulders, just waited for the delivery to come closer.
Look at the contact point. Again, on top of the bounce. But more importantly, just delayed the shot to get a good contact out of it. Short lifting Ahsanullah. Coming back with a very strong reply. Be interesting to keep an eye on Ahsanullah, his movements, his rhythm up to the crease, and also see if he shows any signs with his facial expressions in terms of that elbow that he's recovered from. Is it giving him any further pain? But 2 games in a row, 36 wickets in this format so far for him. And that's more like it. Well, aggression from Ahsanullah. No surprises there. He's enjoying his time out in the middle finally for some match time for him. But Mubassir again covering the line. That's what I would like to watch from the batters. Again, just allowing the ball to come close to him, and Ahsanullah, he wasn't happy. Typical fast bowlers. Good to see that. Absolutely love to see that. Oh, knocked him over. And that is the celebration that everyone has waited for so long. This is a delightful scene to see the speedster back in action. Premeditated shot from Mubassir. He was expecting a shorter delivery, and it was, but not the sort of length where he could have pulled it from. And even the pull shot was from no position whatsoever. Ahsanullah, yeah, dropping it short, but look at that. No room to maneuver with. Tried to force it into the leg side rather than playing with a straight up bat. Mubassir gone for naught. Troubles for Lake City Panthers as 3 down on 14. Ahsanullah celebrates, and it's Danish Aziz. And if you're wondering why Haider Ali hasn't come out, he sustained that finger injury whilst he was fielding. Generally, he's been batting at number 3 in this tournament, so everybody has moved up the order by 1. Shadab came at 3, and now Danish at 5. 25 the average, 125 the strike rate, 3 half centuries. Danish Aziz saw his best cricketing moments in this ground in one of the earlier T20 competitions. Well, he's removing some of the white tapings. Probably the batters wouldn't like it with a white ball. And that's the dismissal. Yeah, no position to pull that shot. The line wasn't correct. And even if you want to pull from that sort of line, you need to extend your arms. He was quite late on that occasion. Hence the trouble. Well, this removing of the white tapes remind me of a famous incident. That wasn't a tape on that occasion. It was a wristband. Great Dean Jones, late Dean Jones, who later said he regretted doing that, asked Curtly Ambrose to remove his white wristbands. Curtly did that, but with some fury. And the spell that followed after that is remembered by many in the cricketing folklore, because he gave absolute hell to Dean Jones and eventually dismissed him. Well, I reckon it's Danish who has initiated this. He came out to bat and straightforward request to the umpires to do so. They're enjoying the sunny afternoon here. Well, the bowlers are on roll today, not the batters, but nonetheless the action is there. Low scoring games always tricky.
Yeah, that's a good start and makes for an exciting game. Umar Siddiq, and nothing short really in the end. Well, which one beats the other? Shadab with one and then Mubassir following suit. Just hard to imagine which was the worst shot played. They're all competing with each other. Now Danish Aziz, I was wondering, the reason I mentioned that story, will that invoke the fury from Ahsanullah? Danish telling him to remove his white padding around his elbow. Well, only time can tell, or even the next delivery by Sanullah as Danish is on strike. Left-handed now. Ahsan, he likes to come in, bang it short with some pace. One slip for Danish. Got deep third, deep fine leg. Here we go again. Fast and furious and straight. Ahsanullah. Danish very compact. That will give him some confidence. It actually brings out the question of shot selection from both sides. Yes, the surface was quite decent enough, but has been used for now 5 games. So you would expect some change in behavior. Even in T20 cricket, you need to adjust quickly to the conditions and how the pitch is behaving. Right back was Danish. Pleading is Ahsanullah. Calm down, says Faisal Afridi. Action-packed drama here at the Pindi Stadium. 3 gone, Lake City Panthers, 14 for 3. Sameen Gul to continue. Well, at this stage, Engro Dolphins were 9 for 3. Wickets are even Stevens. Well, Bangalzai, who's played one cracking shot. Action-packed this championship. And Barrier Town Properties, and Barrier Town goes global. They're developing a world-class gated community in Dubai South. And Engro Dolphins need to turn around their journey to the south of table from to the north by getting some points on the board. Can they do it with the low score they put on the board? That's the question. Hooping in swinger. Bangalzai watched it nicely. A cautious approach from Bangalzai. And he actually has earned that cushion to do so. 3 already down. Just again allowing the ball to come closer, keeping eye on it. Batters did fail, Engro Dolphins, but bowling unit has turned things around. Not much of a total to defend, but still what they can do is keep on attacking in terms of taking wickets. Well, another hairy-fairy strike from Bangalzai. Well, it's interesting, Marina, that in this tournament, generally we haven't seen the ball swing, but earlier Ahmad Butt was able to swing it in the air, and now is Sameen Gul. Yeah, that's Ahsanullah's appeal against Danish. He was up on his toes. He was already down on one knee to celebrate, but was denied that celebration by Faisal Afridi. Probably the height was savior for Danish. Danish was clearly defeated for pace. Generally with that angle also, you have to pitch it real full to get it land in line with the stumps. Marginal in terms of where it pitched. Swing and a miss.
Looks like everyone has got to catch a train or something. Shot a ball. Which was on offer, but lack of footwork there. Just a forward press and then flashing it way outside off stump. And you can see how quickly his head moved up. Wasn't trying to keep it down, trying to elevate as well rather than being on top of it and covering the line. Let's this one go. It's good movement, good channel though. Samin Gul has got plenty of protection on the offside. 4 fielders in the ring, and then the catching slip. Also, third man is back there. And that's a good initiative. We saw in the previous delivery that flashy shot from Danish. He was trying to elevate it, trying to beat the infield. It's a tight ring of players here. Slip in place as well, and he's normally pretty good at it when he tends to keep it down. Change in angle now. Coming round the wicket. He's trying to probably cramp him for room. Just one more to go. Oh, again flashy blade. Inside edge. Lucky for Danish, it did not carry. Single to end the over. 4 overs gone. Lake City Panthers 3 down on 15. अच्छा तेजी से ये रन मुकम्मल किया है दानिश अजीज ने। जब तक ये रहेंगे आप ये देखेंगे कि ये सिंगल्स लेते रहेंगे, लेकिन एक मुश्किल टाइम है इनके लिए बैटिंग करना, क्योंकि एहसानुल्लाह ने बहुत ही कमाल का कमबैक किया है। विकेट हासिल कर लिए पहले ओवर में, और जब आप विकेट हासिल कर लेते हैं तो एक डिफरेंट बॉलर आप हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाता है, रिदम आपका अचानक खुद से ही अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप विकेट हासिल कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा साइन है डॉल्फिन्स के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, अगर 100% फिट हो सके एहसानुल्लाह। उछल कर गई स्लिप के ऊपर से 4 रन्स। एहसानुल्लाह के कद और रफ्तार की वजह से यहाँ बंगलज़ई को आखिर में फायदा हो गया। या बाउंस मिला, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं एहसानुल्लाह के एक्शन से भी और इस पिच सरफेस से भी। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस थर्ड की जानिब गाइड करना चाहते थे, लेकिन टॉप एज हुआ है। बड़े खुशकिस्मत रहे हैं कि बॉल स्लिप फील्डर के हाथों में नहीं गई। ये गेंद जो है ये निस्बतन शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, लेकिन ये उम्दा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इस बार अपने बल्ले का पूरा फेस दिखाया बंगलज़ई ने। दिल का शॉट ड्राइव था। जहाँ बेहतरीन शॉट बंगलज़ई की जानिब से। बहुत ही टैलेंटेड है बंगलज़ई, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक सर्किट में नज़र आते हैं। ख़राब बॉल की आगे पिच कर दिया, और यही तो बैटर्स ढूंढते हैं, आगे पिच हुआ बॉल। और ऑन ड्राइव जब भी एक बैटर मारता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है खेलते हुए। मजीद रन्स यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। मिड ऑन से उमर अमीन, मिड विकेट से भी फील्डर आए थे बंगलज़ई, उन्होंने अब अपना गियर तब्दील कर दिया है। जारहाना लाइन और लेंथ पर आ रहे थे एहसानुल्लाह, उसका जवाब है बंगलज़ई के पास। अच्छे तरीके से गैप तलाश किया है, लेंथ को भी परखा है, वेट किया और खेला मिड विकेट की जानिब। यही कि ऐसा ओवर चाहिए था लेक सिटी पैंथर्स को वापस ट्रैक पे आने के लिए और मोमेंटम गेन करने के लिए। शायद यही वो ओवर है। 13 रन आ चुके हैं 4 बॉलों पे।
क्योंकि सिर्फ 107 रन डिफेंड कर रहे हैं तो ज़्यादा मौके हैं नहीं है बॉलर्स के पास। फिर से पुल शॉट खेलने के लिए गए, शॉट ऑफ लेंथ गेंद की। तो जो स्लिप के फील्डर हैं, अब जाहिर है उनको निकाल दिया गया इन 3 चौकों की मदद से, लेकिन एहसान उल्लाह जैसे बॉलर पर रावलपिंडी के पिच पर स्लिप और विकेट कीपर को निस्बतन पीछे ही खड़ा होना चाहिए। निकाल कर मिड विकेट पे खड़ा कर दिया है स्लिप के फील्डर को, क्योंकि यही बैलेंस ढूंढना है, क्योंकि ज़्यादा रन डिफेंड करने नहीं है, तो इसलिए बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ेगा अपनी फील्ड सेटिंग को। थोड़ा ही ज़्यादा कोशिश करते हुए, ज़्यादा जोर लगाते हुए एहसानुल्लाह, और ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डेस्परेट हालात हैं टीम के लिए, मैच भी जीतना ज़रूरी है, ज़्यादा रन्स भी नहीं है। ये 3 चौके जो आए इस ओवर में, पहला थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन उसके बाद दोनों बहुत ही शानदार शॉट्स ऑन ड्राइव और मिड विकेट की जानिब खेल के 2 बाउंड्रीज हासिल की हैं। मंगलज़ई भी कॉन्फिडेंट होंगे इस ओवर के बाद। पैंथर्स इस वक्त ऑन टॉप होंगे। इसके बाद लगता यही है कि फ़हीम अशरफ खुद आएंगे। समीन गुल हालांकि अच्छा स्पेल कर रहे हैं। इस ओवर में 3 चौके लगाए बंगलज़ई ने, 14 रन मजमूई तौर पर आए, 30 पर 3। आज हफ्ते का पहला दिन है। यहाँ आज स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी है एपीएस की उस बरसी की वजह से, इसलिए आप बच्चों की ज़्यादा बड़ी तादाद देख सकते हैं शायकीन में। लो स्कोरिंग ये थ्रिलर साबित हो सकता है, उसके लिए फ़हीम अशरफ को ज़्यादा ख़बरदार रहना होगा, विकेट लेते रहना होगा, क्योंकि ये 20 ओवर्स की तरफ इनिंग्स नहीं जाएगी पैंथर्स की, ये बात तो यकीनी है। उससे पहले ही ये मैच जो है चला जाएगा एक तरफ। यहाँ तारिक भाई बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि विकेट लेते रहना होगा, बिलीव करना होगा। और यहाँ इस खेमे में ऐसा लग रहा है कि अरफात मिनास ने पैड किए हुए हैं और अमाद भट्ट ने पैड किए हुए हैं। अभी तक हमें हैदर अली की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि वो फील्डिंग करते हुए अनफिट हो गए थे, तो उनकी उंगली जो थी वो ग्राउंड के अंदर धंस गई थी। अगर वो बैटिंग करने नहीं आते हैं और यहाँ पे एक विकेट और गिरती है तो मुकाबला बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। कलाइयों की मदद से खेलें, एक ही रन बनेगा, क्योंकि अगर मुवाजना किया जाए तो 30 ही रन बनाए थे 5 ओवर्स के बाद, 3 विकेट्स गवाकर डॉल्फिन्स ने भी, और यहाँ पे पैंथर्स ने भी 30 ही रन बनाए हैं। इसलिए बिलीव रखना होगा कि हो सकता है, कर सकते हैं, एक विकेट और, उसके बाद ऑलराउंडर्स शुरू हो जाएंगे अगर हैदर अली नहीं आते हैं बैटिंग करने। तो एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि सलमान इरशाद को कब लेके आते हैं। एहसानुल्लाह से 2 ओवर करवाए हैं, 19 रन उन्होंने दे दिया, आखिरी ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ, क्योंकि जो अब दूसरे एक्स फैक्टर हैं वो सलमान इरशाद ही हैं, जो कि अपने स्पेल से मैच का पासा बदल सकते हैं। क्योंकि तारिक भाई फ़हीम अशरफ तो अपना रोल निभाते रहेंगे, वो स्टंप्स टू स्टंप बॉल करते रहेंगे, अच्छी लेंथ पे बॉल करते रहेंगे, ज़्यादा फ्रेंडली डिलीवरीज नहीं देंगे। हैदर अली देखिए उंगली टेप्ड अप है, देखना होगा कि क्या ये बैटिंग फिट है या नहीं है। या मुमकिन है कि आज जो है वो इनके साथ ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते, इनको जल्दी ना भेजने की एक वजह ये हो सकती है क्योंकि ये इनके कलीदी बल्लेबाज हैं, कलीदी खिलाड़ी हैं। और बंगलज़ई ने ये बड़ा शॉट खेला सनसनीखेज अंदाज में, मिड विकेट के पार गेंद आया उतरी
लगता यही है कि गेंद ये गई है आखिर तक। या उनके साथियों ने तो कैंप से इशारा कर दिया था कि बॉल चला गया है 6 रन के लिए, लेकिन अंपायर्स कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, मेक श्योर करते हैं कि सही डिसीजन लिया जाए, इसलिए थर्ड अंपायर मौजूद हैं। अंपायर आसिफ का इशारा है कि 6 रन है। ये अंपायर आसिफ जो हैं वैसे भी काफ़ी निसाबी किताबी लगते हैं अपने अंदाज से। दो गेंदें बाकी हैं पावर प्ले की। रन नहीं मिलेगा बंगलज़ई के लिए। अभी तक ऑल और नथिंग की कैफियत रही है इस इनिंग्स में। ये आखिरी छक्का, अगला कदम आगे बढ़ाया, बिल्कुल परवाह नहीं की फ़हीम की पेस की, उनके साख की, और उम्दा पिकअप। यार बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है इनके अपने करियर के लिए भी, क्योंकि शर्जील खान को बैठा के इनको खिलाया गया है, तो एक एडेड प्रेशर है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अब्दुल वाहिद बंगलज़ई के लिए। अपनी जगह को भी बरकरार रखना है और अच्छी इनिंग खेल रहे हैं अभी तक। एक और पुल शॉट, एक और चौका, जरा सी शॉट ऑफ लेंथ थी और बहुत बुरी तरह पेश आए बंगलज़ई। 6 ओवर्स के बाद 41 पर 3। रन 3 विकेट्स गवा के 6 ओवर्स में लेक सिटी पैंथर्स और बंगलज़ई जो है वो तगड़े लग रहे हैं, अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। 30 रन पर पहुंच गए 16 रन पर, और जिस तरह इनिंग का आगाज़ हुआ था उमर सिद्दीक अच्छे टच में नजर आए थे बाउंड्री के साथ, लेकिन थोड़ा लेजी खेल गए और सीधा अब कैच दे बैठे मिड विकेट को। समीन गुल ने पहली विकेट हासिल की, उसके बाद विकेट्स गिरने का सिलसिला ज़रूर शुरू हुआ था। शादाब खान 0 पे आउट हुए, एहसान उल्लाह जिन पे बहुत सारी नज़रें हैं उनको बॉलिंग पे लाया गया और आते ही उन्होंने मुबस्सिर खान की विकेट हासिल की। 3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। बंगलज़ई ने एक ओवर में 3 चौके हासिल किए एहसान उल्लाह की बॉलिंग पे, और उससे लेके अभी तक काफ़ी स्टेबिलिटी और काफ़ी बाउंड्रीज देखने को मिली हमें अब्दुल वाहिद बंगलज़ई के बल्ले से। अच्छे टच में, अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। शर्जील खान की जगह टीम में शामिल हुए हैं और अभी तक बहुत ही कमाल का आगाज़ अब्दुल वाहिद बंगलज़ई के लिए, और अपनी टीम को थोड़ा स्टेबल किया है, 41 पर पहुंचा दिया है। अंपायर आफरीदी का इशारा कि दूसरा पावर प्ले। कासिम अकरम को वापस लाएं, पहला ओवर किया था, 4 रन दिए थे। खुद आना। इस बैरियर टाउन चैंपियंस कप में कासिम अकरम ने बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग अच्छी की है। शाबाश। ख़ास तौर पर जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको परेशान करते रहे। आना सिंगल है। इनको ज़्यादा आजा तंग नहीं करते, लेकिन इतना करते हैं कि या आउटसाइड एज ले जाए, या जब राउंड द विकेट आते हैं तो फिर बल्ले के जो दोनों किनारे हैं उनको खेल में रखते हैं। जहाँ बहुत ही कंट्रोल बॉलिंग करते हैं, लाइन और लेंथ बहुत ही शानदार है, टाइट बॉलिंग करते हैं स्पेशली बाएं हाथ के बैटर्स को, जैसे आपने कहा। और ये अच्छा कॉम्बिनेशन है पैंथर्स के लिए। दानिश अजीज के पास वो तजर्बा है, काफ़ी देर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हैं पाकिस्तान के लिए, इसलिए वो चीज़ों को कूल एंड काम रखेंगे अंदर। और दूसरी जानब बंगलज़ई हैं जो कि थोड़े एग्रेसिव हैं, जो कि बड़ी हिट मार रहे हैं, बुरे बॉल को बख्श नहीं रहे हैं। इस बार भी नच किया था दानिश अजीज ने। अपनी कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। एक फ़ायदा होता है यहाँ साजिद खान की मौजूदगी का, कि खुश रहते हैं इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अच्छे एंटरटेनर हैं साजिद खान, और अब स्टार वैल्यू के साथ आए हैं। नौजवान क्रिकेटर सीख सकते हैं कि किस तरह मुकाबला किया जाता है दुनिया की बड़ी टीमों का। अच्छा ओवर कासिम अकरम का, सिर्फ 3 ही रन इस बार उन्होंने दिए, 44 पे 3।
स्कूल में छुट्टी का भरपूर फायदा उठाते हुए मैदान में काफी बच्चे आए हैं। यहाँ पे शान शेख को लेके आए हैं। अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल दानिश अजीज की जानिब से। 2 रन तो यकीनी बनेंगे और यही मैंने पहले कहा था कि जब तक दानिश अजीज रहेंगे आपको कि नजेज ये गैप तलाश करना, सिंगल 2 ये नजर आता रहेगा। 3 विकेट हासिल किए हैं शान शेख ने। लेकिन तालिबी क्या यहाँ पे बेहतर होता कि सलमान इरशाद को लाया जाता। पिछला मैच थोड़ा ऑफ मैच जरूर था लेकिन उनके अंदर वो एक्स फैक्टर है, वो आउट करने की एबिलिटी रखते हैं। दानिश अजीज स्पिन को अच्छा खेलते हैं, कदमों का इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। तो क्या शायद क्योंकि विकेट्स आपको हासिल करनी है तो सलमान इरशाद को जितना जल्दी लाए उतना बेहतर चांस है। मुमकिन है फहीम अशरफ जो हैं ये अब अपने एंड से उनको लेकर आए, मीडिया सेंटर एंड से, क्योंकि वो खुद महंगे रहे थे एक ही ओवर के बाद। और यहाँ ये कदमों का इस्तेमाल कर गए हैं और गेंद को पहुंचा गए हैं मिड विकेट की जानिब। और वही हुआ है जिसका खदशा रहता है लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ लेफ्ट हैंडर की मौजूदगी में। दानिश अजीज जैसे मैंने कहा कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, मैनेज बहुत अच्छा करते हैं, एग्रेसर है स्पिन के अगेंस्ट। और लेफ्ट आर्म स्पिन तो और आसान हो जाता है। देखिए आराम से अब सिंगल भी ले लेंगे, यही खतरा रहेगा डॉल्फिन्स के लिए जब तक ये रहेंगे। इसलिए शायद स्पिन का लगाना इनके सामने उतना सूदमंद साबित ना हो। आखिरी गेंद इस बार कट करना चाहते थे लेकिन ये आम बॉल थी। बंगलज़ई नाकाम रहे 8 ओवर्स के बाद 53 पर 3। कासिम शाबाश। It's placed away. That will be a boundary. Danish Aziz is very prolific against spin. He's putting Qasim Akram to sword. Short and wide and punished. Good afternoon, Salman Butt. Thank you, Shaji. Yes, runs coming now. And in the mode of boundaries, 6 in the previous over and now this boundary. As Danish has began to look good and creating an impact. Remember, they're not chasing a huge total. So any good decent knock would ease out Lake City Panthers in this chase. It's well documented. You can test Danish with some extra pace and short stuff. But he's very prolific against spin. Very comfortable both on front and back foot. It's a good little partnership. They got together when the score was 14. Bangalzai has played his part as well. 31 of just 19. 46 the partnership. And this man always got a smile on his face. Well, he's a proper character. Somebody who brings a lot of energy in the team, in the ground. Wonderful to see. Great attitude, Sajid Khan. As Lake City Panthers milk the runs, Bangalzai 31 of 19 has played a good hand today. He's presented more often, full face of the bat. Danish 21 of 21. But Sajid, he hasn't played a single game in the championship, but still always chirping, always smiling. It's a big shout. It turned him right around. It turned across the face of his bat, and Danish was all at sea, but I think they might have been doing too much. A little bit of extra bounce too. We'll come back and have a look. 9 gone, 61 for 3.
सब जगह रेडी रही Persisting with spin and a huge appeal on the last ball of last over. समीर स्टार्ट में रहना है May get a chance to have a look. They desperately need a wicket, Engro Dolphins. शाबाश यार शाबाश They do need wickets. There is no other way. This is the appeal that was made in the last over. I think it pitched outside leg stump. And the umpire was very clear with his response. He's done a good job, Faisal Afridi. Quick bowler, an aggressive bowler back in his days. And now a very subtle umpire. This is Haider Ali signing balls. And I wonder if everything is okay with him. He's fit to go. This is big. Down the ground. No chance for any fielder. That's a 6. Maximum by Bangalzai, who's played well, looked good. And he's counter-attacking now. It's 50 partnership. Bangalzai, very good use of the feet. Very quick to see the length, the trajectory, down and bang. Sweet connection. You can't blame the bowler. He has to look for wickets. So he's just tossing up in a hope that he might get an edge, or maybe the ball spins. But Bangalzai saw it tossed up and he danced down the track. Hit it for maximum. excellent excellent शाबाश Important in terms of development of Bangalzai. He's got this opportunity after being on the bench for a few games. Got himself a start. Needs to make it count. Another one, solid thump. Probably will get to the fielder on a couple of bounces. Yeah, important for him not to give it away now that he's got himself to 40. At the halfway stage, Lake City Panthers 70 for 3 and time for drinks. The Lake City Panthers batting card, Bangalzai right at the top, 40 of 25. And the
3 batters to follow. Couldn't make an impression. 5 for Umar and 2 knots for Shadab and Mubassir. And Danish in the end putting up a partnership which has now taken the total to 70 of 10 overs, and it's 3 down. Not a good day for Pindi batters. Umar Amin got 4 and Mubassir and Shadab ducks. It's a good partnership though. They came together at 14. So far 56 spanking strokes. Danish Aziz against spin. It's a good matchup for him. And up the wide Bangalzai is a very good all-round cricketer. Very good young batter. 2 wickets for Samin Gul and 1 wicket for Ahsanullah. That was a sight for the sore eyes when Ahsanullah knocked over Mubassir and celebrated. That man again onto the bowling crease. That'll be interesting. He bowled 2 overs in the first game. Remember, he's coming out of a long injury. How would he react to the second spell? Well, he seems pretty good, pretty okay with his bowling. He's putting the effort in. Today he's bowling a bit quicker. You can see that the pace is up from him. He's running well. He's completing the action. And he's taken a wicket, which always adds to the confidence. And the sports staff would definitely want to ease him in without putting too much pressure on him. But he himself is a very aggressive fast bowler. And there you see hard length from him. This comes naturally to him. And this aggressive part after bowling. We all love that, don't we? Now, Salman, you were a batter yourself, but definitely have loved the battle with the extreme quick bowlers. Yeah, I think a bit of this should be there, because you see sometimes when the teams play, people start complaining that they're too friendly. And then this sort of stuff comes up which just makes it more spicy, and the competition gets intense as the spectators look on. And Mr. Dilawar Ali standing there in between. How beautiful this picture is. Looking for the Yorker, ended up being a full toss. No damage done though. Rara looking to be aggressive with his fielding. What did you make of Ahsanullah so far in terms of his rhythm, in terms of his run up and approach? I know we can't judge pace, there is no speed guns, but with the naked eye, Salman, what do you make of his comeback? Well, I just mentioned regarding his pace that I think it's getting better, certainly better from the previous game. He's running in well, completing the action. There doesn't seem to be a breakup in all that stuff when it carries on. And the intent, the aggressive intent, which comes so naturally. Look at that. This is what Ahsanullah is all about. And this is what Bangalzai hang on. Yep. Well, Ahsanullah shoots the arrows and Bangalzai had other intentions. Intensity. That's what you like to see. Competition inside. People challenging one another. Have a look at this. And Ahsanullah comes and he says something, has a word with Bangalzai. Oh, wow. Oh. Shooting down the arrows. There's a full toss which has been slashed to deep point. And could have been a boundary. Lucky as Ahsanullah that it went straight to the fielder. That for me was the moment of the tournament. Ahsanullah, the longer follow through, and a word with Bangalzai. Sharp-witted Bangalzai was ready to respond. What do you make of this, Wahid? This is what Ahsanullah said, and Bangalzai said, well, that's my response. Cricket needs characters, and Ahsanullah certainly is one. Danish Aziz, bit mellow. 11 gone, 71 for 3.
other speedster. Salman Ashad has been given the ball. Barriertown Properties in the meanwhile. Barriertown goes global. They're developing a world-class gated community in Dubai South. All the best with your development endeavors. "74 wickets for Salman Ashad in this format. He's a prolific bowler, mostly suited for his variations in the death of an innings. Here, his responsibility is to take some wickets, and quickly too. Gives himself some room, slapped away. Bangalzai on the charge. Well, the batter is in a different zone today. He's aggressive, he means business, and he's getting balls out of the middle of the bat, coming down and just placing it, caressing it through point. And the fielder, it was a good effort, but to no avail. 4 runs. 75 the Panthers move on to, as Bangalzai is nearing a 50. This one is pulled to mid-on for a single. He's very easy on the eye, Abdul Wahid Bangalzai. Despite hitting the forceful strokes, he does maintain a very good balance and poise. This will be a good contest though between Salman Irshad and Danish Aziz. Danish's troubles against short pitch bowling has been well documented. Fine leg back. There's also square leg. He's a mid wicket in the ring on the onside. Still length delivery, nicely punched for a single, Danish Aziz. So equation remains now only 31 run required, 30 runs rather, or 51. If anything doesn't happen for Engro Dolphins very quickly, it may just turn into a walk in the park. The Dolphins need a miraculous bowling performance. Bangalzai is after Salman Ashad as the timing he wanted, he doesn't get it on, and he will get a couple, which will take him to 48, and the Panthers to 77, or 79 rather. Staying one step ahead of Salman Ashad, Bangalzai preempting for those slingy full deliveries, so he's backing away, opening up that offside for him. Just make his hands go through the line. This one stays inside, pulls, will only get a single. Still have to wait for that 50. Bit of a mixed bag of an over from Salman Irshad. His job is not very easy. Batters didn't put a lot of runs. They had a sniff when they had Lake City Panthers down 3 down for 14. But then this partnership has taken the life out of this game in terms of any Dolphins comeback that at that stage looked imminent. Short, had to fetch it from outside the off stump. Danish Aziz will get a single to keep the strike. 12 gone, Lake City Panthers, 81 for 3. और यही खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की कि एक यंगस्टर मैच अपने ऊपर ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग कर रहा है, जहां पे
तकरीबन दोनों ही टीम्स के बैटर है तारिक भाई, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले हैं, तो अब्दुल वाहिद बंगलज़ई की ऐसी इनिंग खेलना ये खुशाइंद है। पुल शॉट, 4 रन्स मिल जाएंगे। फ़हीम अशरफ ने अपने ओवर की इब्तिदा में ही गेंद ज़रा शॉट गिराई और दानिश अजीज बहुत अच्छा खेलते हैं बैकफुट पर। या ये आइडियल लेंथ है, ज़्यादा पेस है नहीं, इसलिए अगर आप इस लेंथ पे डालेंगे तो बैटर आपको नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही आसानी से गैप तलाश किया, 2 फील्डर ज़रूर मौजूद थे लेकिन घबराए नहीं हवा में खेलते हुए भी। 71 रन्स की ये मैच विनिंग पार्टनरशिप है। ज़्यादा बाहर थी, अंपायर वाइड का इशारा दे रहे हैं। जब ये इनिंग्स शुरू हुई पैंथर्स की तो डॉल्फिन्स की जो वाहिद उम्मीद है वो हैदर का ज़ख्म था और वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए, लेकिन 3 विकेटें जल्दी गंवाने के बाद इनकी जो बॉलिंग थी उसमें उतनी डेप्थ नज़र नहीं आई। सलमान निशाद को देर से लाया गया, कोई जवाब नहीं है फ़हीम अशरफ के पास। जो सवाल उठे थे पहले हाफ में उसके बाद से। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त मौका मिला था इनको जब 3 विकेट्स जल्दी हासिल कर ली थी। सलमान इरशाद का आपने जिक्र किया, उस तरह अपने रिदम में नज़र भी नहीं आया इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल उनको लेट ज़रूर लाया गया लेकिन वो जो रिदम, जो एक्सपेक्टेशन उनसे थी वो उस पर पूरा भी नहीं उतर सके और शायद यही वजह है कि डॉल्फिन्स का वो कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सका। सलमान इरशाद का रिदम ना होना, उमर अमीन की फॉर्म ना होना, ये 2 मेन इनके प्लेयर थे इस टीम में और दोनों का ही टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन, वो प्लेइंग 11 में जो हम बैलेंस देखते हैं वो भी नहीं बन सका है डॉल्फिन्स के लिए। लेकिन दाद देनी होगी बंगलज़ई को भी, क्या शानदार इनिंग खेले अंडर प्रेशर मौके पे और अपने 50 रन भी इस सिंगल के साथ मुकम्मल करेंगे। बहुत ही जिम्मेदाराना इनिंग यहाँ पे बंगलज़ई की जानिब से, अपनी जो अपॉर्चुनिटी दी गई उसको कैपिटलाइज किया और अपनी 6ठी निस्फ सेंचुरी इस लेवल पे मुकम्मल की। जहाँ कुछ अर्सा पहले कहीं खो गए थे बंगलज़ई, भाई खुद को उनने वापस पाने की कोशिश की है। 6 चौके 2 छक्के लगाए, बेहतरीन स्ट्राइक रेट। एक ऐसे दिन पर जो कि बैटिंग डे नहीं कहलाएगा, लो स्कोरिंग मैच में दोनों टीमों के दरमियान उनकी बैटिंग यकसर फर्क रही। फिर से पुल शॉट, फिर से तरने वाला साबित हुई ये लेंथ और रफ्तार फ़हीम की दानिश के लिए। यार अब तो बहुत आसान हो गई है बैटिंग, ऐसा लग रहा है। पिच बदल गई, हालात बदल गए, पेस बदल गई, सब कुछ बदल गया है और सब कुछ लेक सिटी पैंथर्स के तरफ गया है। देखिए बहुत आसानी से गैप तलाश कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, बड़े हिट्स खेल रहे हैं और इसीलिए कहा था कि जिस कंडीशन में, जिस पोजीशन में दानिश आए थे वो आइडियल थी इनके लिए। ज़्यादा प्रेशर था नहीं, नच किया और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे लाते हुए मिड विकेट को पीछे भेजा गया, अराउंड द विकेट आएंगे। ये ज़्यादा बेहतर एंगल है दानिश अजीज के लिए। फ़हीम अशरफ आज ज़्यादा काट नज़र नहीं आई। लेफ्ट हैंडर को ये गेंद सीम करते हैं, बाहर को निकालते हैं, लेकिन ये जो पिच है कदरे सुस्त है, तो पिच से जब मदद ना हो तो फ़हीम अशरफ के लिए कभी कभार संभलना मुश्किल हो जाता है। लेंथ बॉलर हैं बेसिकली और जब तक उस तरह बॉल हिलेगा नहीं तो उस तरीके से फायदा इनका होता नहीं है। ये वो ज्यादा बॉलर हैं जो कंटेन करते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ भी नहीं क्योंकि बंगलज़ई ने बहुत ही शानदार बैटिंग की है। 50 रन अपने मुकम्मल किए हैं। पहले ही बॉल से बहुत पॉजिटिव नजर आए थे, ऐसा लगा नहीं कि क्रिकेट से बाहर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव शॉट्स, अटैकिंग शॉट्स ग्राउंड के चारों दाने, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, दोनों को ही बहुत ही महाराना तरीके से बैटिंग की है। कलाइयों का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक बहुत ही टाइमली निस्फ सेंचुरी अपने लिए और टीम के लिए। काफी खुश होंगे, पिक्चर में तो खुश हैं, लाइव भी बहुत खुश होंगे क्योंकि थोड़ी डगमगा जरूर गई थी इनिंग, लेकिन उसको संभाला एक यंगस्टर ने अपने 50 से
और उसका साथ दिया है दानिश अजीज ने एक्सपीरियंस के साथ। उमर, शादाब और मुबस्सिर ज़्यादा कुछ कर नहीं सके थे और अब ले आए हैं एहसानुल्लाह को अपने आखिरी ओवर के लिए। शायद ये आखिरी चांस हो सकता है इनके लिए, लेकिन शायद अब थोड़ी देर हो गई, अब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे। सिर्फ अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस शायद यहाँ पे रिदम और बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, इनकी जो नज़र है सकलैन मुश्ताक की, ये अपने खिलाड़ियों की टेक्निक और दीगर पॉइंट्स के साथ साथ इनकी नेट रन रेट पे भी होगी जो कि मनफी में है, उसको आज बेहतर करने का मौका है। इससे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तो इस मैच को ख़त्म किया जाए, कोशिश करनी चाहिए इसी ओवर में ख़त्म किया जाए, क्योंकि फिर आखिरी दिनों में जब पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं फिर नेट रन रेट की ही जो बारीकियां हैं, वहीं फिर डूबते को तिनके का सहारा वही नेट रन रेट का होता है। यहाँ स्पेशली जब 5 में से 3 टीम्स ने आगे जाना हो तब तो और करीबी मामला हो सकता है, और कहीं ना कहीं इनका और लायंस का मुकाबला काफ़ी सख्त होने वाला है एंड पे। मार्कोर्स और स्टैलियंस ने बहुत शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं, वो थोड़ा सिक्योर नज़र आते हैं। तो लायंस और पैंथर्स के जो दरमियान आखिरी का मुकाबला होगा और इनका जो आपस में मैच होगा वो बहुत ही तगड़ा मैच होगा। और दूसरी जानिब डॉल्फिन्स के लिए रास्ते जो हैं वो और मसदूद हो जाएंगे। अच्छा कट शॉट, एक ही रन बनेगा। उम्दा फील्डिंग की सलामान ने, क्योंकि डॉल्फिन्स की ये मुसलसल ये 5वीं नाकामी होगी। फिर अगर ये 3 मैचेस मुसलसल जीत जाते हैं तो भी 6 पॉइंट्स होंगे, और जो इनकी नेट रन रेट की हालत है वो फिर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जैसी क्रिकेट इन्होंने खेली है बाकी टीमों में बहुत वाज़ेह फ़र्क रहा है इनकी अप्रोच में, इनकी टीम सिलेक्शन में, इनकी बैटिंग में, बॉलिंग में, हर तरह से ही पीछे नज़र आए बाकी सारी टीमों से। और यहाँ पे बंगलज़ई ने उठा के खेल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहाँ पे। ताहिर बेग ने ये कैच लिया है, एहसानुल्लाह ने अपना बदला चुकाया और विकेट हासिल की अब्दुल वाहिद बंगलज़ई की, लेकिन अपना काम वो यकीनन कर गए हैं। जी हाँ, पैंथर्स की टीम यहाँ कोशिश कर रही थी कि अपने नेट रन रेट को वो बढ़ाया जाए। बंगलज़ई ने उनकी खासी मदद की, लेकिन यहाँ पर वो आउट हो गए उसी कोशिश में जो कि अच्छी कोशिश थी। अब्दुल की जानिब से 38 गेंदों में 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। आज इनको हर तरफ से शाबाश मिलेगी। 96 पर 4। दानिश और अब्दुल के दरमियान 82 रन्स की इस मुकाबले की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई और सकलैन मुश्ताक ने उठकर उनका इस्तकबाल किया है। आज हकदार हैं बंगलज़ई। स्लाइस कर दिया इसे दिलकश तरीके से। अरफात में नहास ने 4 रन्स के लिए अच्छा रफ्तार को इस्तेमाल में लाए। यॉर्कर की तलाश में थे एहसानुल्लाह, लेकिन चूक गए अपने लाइन और लेंथ दोनों में। बहुत ही बासलाहियत बैटर भी हैं। पहली गेंद को 4 रन्स के लिए खेलकर स्कोर को पहुंचा दिया 100 रन पे, और अब सिर्फ 7 रन बाकी हैं जीत के लिए लेक सिटी पैंथर्स को। काफी फायर बॉल था और आसानी से इसे खेला। एहसानुल्लाह का ये अच्छा ओवर जिसमें आखिरकार उन्होंने अब्दुल वाहिद बंगलज़ई की विकेट ली, लेकिन खासी देर हो चुकी थी। 100 पर 4।
ये 14 रन्स पर तीसरी विकेट गिरी थी और उसके बाद पावर प्ले में उसके अख्ताम तक दोनों टीमें जो हैं बिल्कुल हम पल्ला थी, लेकिन बाद में यहाँ बंगलजई ने जब जारहाना खेल शुरू किया, T20 क्रिकेट की जो ज़रूरत है उसको पेश नज़र रखा तो वो किसी के हाथ नहीं लगे और बहुत अच्छा लगा है लेक सिटी पैंथर्स को इस दौर में जो T20 क्रिकेट की ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक बैटिंग करते हुए देखना। हालांकि बासानी वो 100 इस साहत के हदफ के बारे में रिवायती अंदाज में सोच सकते थे, जो अक्सर यहाँ पाकिस्तान में एक सोच पाई जाती है, लेकिन मॉडर्न सोच के साथ गए और अच्छा लगा। बिल्कुल, और इसलिए भी दाद देनी होगी कि टीम में वो कमबैक कर रहे थे, शर्जील को रिप्लेस कर रहे थे, जो कि आसान काम नहीं है। बंगलज़ई शर्जील खान को रिप्लेस कर रहे थे प्लेइंग 11 में, उसका भी इजाफी प्रेशर उन पे होगा। शर्जील बड़े प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के। शाह साहब, इसके बरक्स अगर वो तस्वीर का दूसरा रुख अगर हम देखें तो हो सकता है कि आज उन पर दबाव निस्बतन कम हो। नदीम खान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्योंकि शर्जील खान से पहले इनको खिलाया गया था इब्तदाई मैचेस में, शायद उस वक्त दबाव ज़्यादा था कि शर्जील की मौजूदगी में जब वो बेंच पर हैं तो वो ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। अब जब शर्जील जो हैं वो अपनी कारकर्दगी की वजह से बाहर हुए हैं तो इन पे दबाव शायद कम हुआ उस लिहाज से। फ्लैट पहले से खेला लेकिन रन एक ही मिलेगा। जी ज़रूर, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये आज भी नाकाम होते तो मैनेजमेंट के लिए शर्जील को बाहर बैठाना एक आउट ऑफ फॉर्म यंगस्टर की जगह, ये भी एक ट्रिकी डिसीजन हो सकता था। तो प्रेशर बहरहाल था, लेकिन उसका जवाब अपने बल्ले से दिया। बिल्कुल, यही सही तरीका भी होता है। इस टूर्नामेंट में ये तीसरी कामयाबी होगी पैंथर्स की। शादाब खान की कप्तानी में यहाँ मिड ऑन के फील्डर ये गेंद के नीचे पहुंचा चाहते हैं और तकरीबन आ चले थे वहाँ पर फ़हीम अशरफ, अलबत्ता गेंद आखिर में उनसे दूर होती चली गई। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी लेकिन काफ़ी दूर थी फ़हीम की पहुंच से। मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे दायरे के अंदर, मिस टाइम कर गए दानिश। अरफात थे दरअसल, लेकिन फ़हीम के लिए मौका नहीं था कैच करने का। अच्छे T20 क्रिकेटर हैं अरफात मिनहास, बैकफुट पर उम्दा खेलते हैं। हम वक्त एक मसरूफियत नज़र आती है इनके खेल में, किसी भी पोजीशन पर अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में इनको कहीं भी खिलाया जा सकता है। एक फ्लोटर के तौर पर इनका इस्तेमाल होगा आगे चलकर, ये यकीनी तौर पर हम देखेंगे जितनी सलाहियत है इनमें। जी बिल्कुल, एक जो ग्रेड होता है जो आपने रीच करना होता है अंडर 19 से, जब आप फुल सीनियर्स में आते हैं, वो इस दरमियानी मरहले में है इस वक्त। जितनी उनकी सलाहियत है ज़रूर आप उन्हें देखेंगे बड़ी स्टेज पर। फुल शॉट खेल दिया, बिल्कुल दौड़ने की ज़रूरत नहीं। मैच का इख्तिताम किया शायान शान तरीके से अरफात मिनहास ने ये चौका लगाकर और 6 विकेट से यहाँ शिकस्त दी है लेक सिटी पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही लेक सिटी पैंथर्स की। टॉस जीतने से लेकर उनकी बॉलिंग डिस्प्ले और उसके बाद बैटिंग में जिस तरह उन्होंने इस टारगेट को अचीव किया, थोड़ी सी उन्हें मुश्किल हुई 3 विकेट गिरने के बावजूद, लेकिन आप कह सकते हैं कि आगाज से इख्तिताम तक मुकम्मल तौर पे इन्होंने इस मैच को डोमिनेट किया। एंग्रो डॉल्फिन्स शिकस्तों के अंबार जो हैं वो लगते जा रहे हैं, उनके लिए 5वीं शिकस्त है उनकी इस टूर्नामेंट में।
ये लम्हा फ़िक्रिया होगा सरफराज के लिए, फ़हीम अशरफ के लिए भी और उन तमाम सीनियर प्लेयर्स के लिए एंग्रो डॉल्फिन्स की टीम में। लेकिन लेक सिटी पैंथर्स को इन 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी और उन्होंने वो अच्छे वक्त में हासिल किए, जिससे उनका नेट रन रेट भी बेहतर होगा। काफ़ी कम्पिटिटिव टेबल है टॉप की 4 पोजीशंस के दरमियान, इसलिए ये एक अच्छी जीत रही लेक सिटी पैंथर्स के लिए। एंग्रो डॉल्फिन्स सोच पर मजबूर, लेकिन जो अच्छी चीज़ लगी उनकी जानिब से एहसान उल्लाह ने अपने 4 ओवर्स मुकम्मल करवाए इस मैच में, 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। झलक दिखाई उन्होंने अपनी रफ्तार की भी और एग्रेशन की भी। शादाब खान बतौर कप्तान वापसी हुई उनकी मुकम्मल फिटनेस के साथ। बैटर बॉल से उनका अपना रोल तो महदूद रहा इस टूर्नामेंट, इस मैच में भी, लेकिन जीत के साथ ज़रूर वो मुतमईन होंगे। इस कामयाबी की ज़रूरत थी दरअसल यहाँ पर पैंथर्स को। डॉल्फिन्स के लिए अब मामला और ज़्यादा जो है परेशानी का बायस बनेगा कि आगे चलकर क्या कॉम्बिनेशन हो, क्या नए खिलाड़ियों को और ज़्यादा मौके दिए जाएं। यहाँ पर 109 रन्स बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर लेक सिटी पैंथर्स हैं। बंगलज़ई 51 रन के साथ टॉप स्कोरर है। दानिश अजीज़ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, नाकाबिल शिकस्त वापस आए हैं 34 गेंदों में 38 रन बनाकर। 3 विकेटें जब 14 रन पर गिरी थी तो किसी हद तक इनको जाहिर है मुश्किल हो सकती थी, लेकिन बंगलज़ई और दानिश अजीज़ ने वहाँ जारहाना अंदाज अपनाया जो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। 2 विकेटें समीन गुल ने हासिल की और 2 ही विकेटें एहसान उल्लाह ने। पूरे 4 ओवर्स का स्पेल करवाया एहसान उल्लाह ने। समीन गुल भी गेंद को स्विंग कराने में कामयाब रहे, लेकिन बोर्ड पर ज़्यादा रन्स नहीं थे इन बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए और ये टारगेट 15 ओवर्स के अंदर अंदर ही हासिल कर लिया लेक सिटी पैंथर्स ने। बैटिंग के लिए आज मुश्किल दिन था, आप कह सकते हैं कि इसमें क्या गलती बैटर्स की थी अपनी ही, और यहाँ पहली विकेट गिरी जब उमर सिद्दीक बिल्कुल हाफ हार्टेड सा पुल शॉट और शादाब लूज ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया उन्होंने। बंगलज़ई ने अलबत्ता दूसरा रंग रूप दिखाया, लेकिन मुबस्सिर उनका ज्यादा साथ नहीं दे सके। ये एहसान उल्लाह की पहली विकेट थी आज की। यहाँ बंगलज़ई पेस पर बहुत ही बेहतर लगे, खासा उनके पास वक्त है शॉट्स खेलने का। ये उनका पिकअप शॉट था जिस पर 6 रन पाए थे। पुल शॉट हमेशा से ही उनको रन दिलाने का बायस रहा है। बाद जब दानिश अजीज़ आए काम और ज़्यादा आसान होता चला गया। बंगलज़ई और दानिश अजीज़ के दरमियान 82 रन की पार्टनरशिप मैच विनिंग साबित हुई। आखिर में बाउंड्रीज की बदौलत जल्दी काम खत्म करने में मदद की अराफात मिराज से। तो आसानी ये मार्का यहाँ मार लिया है आज पैंथर्स से। एंग्रो डॉल्फिन्स ने बनाए 106 9 खिलाड़ियों के आउट होने पर। फहीम अशरफ 25 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान ताहिर बेग जो विकेट कीपर अखलाक से पहले आए थे उन्होंने 19 रन बनाए और अखलाक उल्टा स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हुए। दोनों अच्छे लग रहे थे ताहिर और अखलाक, लेकिन वसीम जूनियर ने अच्छा स्पेल किया अराफात और अम्माद की जानिब, और जवाब में लेक सिटी पैंथर्स को कोई मुश्किल नहीं हुई 3 विकेटें गिरने के बाद ये मैच जीतने में। तो बहुत बहुत मुबारक हो लेक सिटी पैंथर्स को। और इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल आपके सामने। एलाइड बैंक स्टैलियंस और यूएमटी मारखोर्स 8-8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। नेट रन रेट पर स्टैलियंस को बरतरी हासिल है। लेक सिटी पैंथर्स अब 6 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं और ये 3 टीमें क्वालिफिकेशन की दौड़ में होंगी जो टॉप की 3 टीमें होंगी। नूरपुर लायंस अभी इस मुकाबले से बाहर नहीं है, उनके पास 1 गेम का कुशन है लेक सिटी पैंथर्स के खिलाफ।
4 पॉइंट्स पर वो चौथे नंबर पर हैं। एंग्रो डॉल्फिन्स का टूर्नामेंट ऐसा लगता है कि यहाँ खत्म हो चुका है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापसी होगी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के साथ। Yeah, fabulous performance by Lake City Panthers as they beat Engro Dolphins by 6 wickets to have this authoritative win for themselves. Welcome to the post-match presentation. And before we talk to the players and the captains, let me invite, I've got Rafakat Malik, Director of Sales, JV Projects, Barrier Town as our presentation party. And first of all, I would like to invite the player of the match for his fantastic 51 runs. It's Abdul Wahid Bangalzai. In a game dominated by the bowlers, this youngster stood up and played a fantastic knock, a match-winning inning for his team. "38 deliveries, 6 fours and 2 sixes." Abdul Wahid Bangalzai, अच्छा कैश इन किया आपने अपॉर्चुनिटी को जो शर्जील की जगह आपको दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। बस यही थी, जब पहला मैच खेला उसके बाद बस यही थी कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं अपना 100% दूंगा। तो बस उसी तरह काम कर रहा था अपनी बैटिंग पे, तो अल्लाह ताला का शुक्र है आज वो मौका दोबारा आया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। मेरी तरफ देख लीजिए, अच्छा लग रहा है आपको बैटिंग करता हुआ देख के। बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट से आप गए थे, आपके इर्द गिर्द विकेट्स गिर रही थी, लेकिन बहुत ही मैच्योरिटी का फ़ायदा आपने उठाया वहाँ पे। जी बिल्कुल, बस यही थे, जिस तरह से मेरी एबिलिटी है तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि मैं अपनी एबिलिटी को शो करूं। तो जहाँ जहाँ मैं यही खेल रहा था कि मैंने कहा जहाँ पे मुझे बॉल मिलेगा, बॉल के मेरिट से खेलना है, तो उसी तरह जहाँ पे मैं खेलता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्म। थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई, एहसानुल्लाह के साथ अच्छी पेस से भी बॉलिंग कर रहे थे, कैसे डील किया उसको? बस एहसानुल्लाह कहता है कि मैं आपके हेलमेट पे मारूंगा, मैंने कहा मेरे हाथ में बल्ला है, तो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया वो। जी, लेकिन सब अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत ही शानदार बैटिंग की आपने। ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग गेम्स। थैंक यू। Right now, time to talk to the losing captain for Dolphins, Fahim Ashraf. मुश्किल हो गया है आपके लिए भी जवाब देना, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। जी बिल्कुल, कोशिश तो कर रहे थे शुरू से अपनी के कम्बिनेशन बनाए और एक आधी जो है वो मैच जीते ताकि टीम का कम्बिनेशन बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा। कहाँ आपको लगता है मेजर, अगर आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करनी हो आपको कि ये चीज़ मिस आउट कर रहे हैं एज अ टीम?
मुझे लगता है हम लोग एज अ टीम जो है ना, एज अ टीम क्लिक नहीं कर रहे। किसी एक शोबे पे आप डाल दें ये अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग एज अ टीम अच्छा नहीं खेल रहे। एज अ टीम चीज़ें जब अच्छा नहीं कर रहे होते तो फिर कोई भी चीज़ आपके हक में नहीं जाती। तो क्या अलग करना होगा? अभी 3 मैचेस हैं, शायद आप आगे नहीं जा सकेंगे, लेकिन स्टिल काफ़ी कुछ खेलने के लिए है। जी बिल्कुल, कोशिश तो ये है कि एज अ टीम जो है हम अच्छी क्रिकेट खेलें। जब आप एज अ टीम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो सारी चीज़ें आपके हक में जाती हैं। फिर बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, बैटिंग भी हो रही थी, इवन कि फील्डिंग भी हो रही थी। एज अ टीम हमें मुझे लगता है एज अ टीम हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करें। जितनी कर रहे हो सकता है इसमें हम और बेहतरी कर भी सकते हैं। तो मुझे लगता है एज अ टीम अगर हम और एफर्ट करें और चीज़ें बेहतर करें, जो गलतियाँ करें और गलतियाँ ना करें तो बेहतर हो सकता है। थोड़ा शायद बैटर्स से भी बात करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और शॉट सिलेक्शन पे भी बात करने की ज़रूरत होगी। हाँ जी बिल्कुल, बात कर भी रहे हैं, तो कोशिश है कि आइंदा वो गलतियाँ ना करें उनसे, क्योंकि बात कर भी रहे हैं और करते भी रहें, क्योंकि अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, 3 मैचेस हैं। कोशिश यही है कि जीतें और अच्छे नोट पे फिनिश करें। Tough luck for today and all the best for remaining games. Thank you very much. Right, now time to talk to the winning captain, Shadab Khan for Lake City Panthers. Well played as a team, as a unit, but कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न आ गए थे जब 3 विकेट्स गिर गई थी। देखिए बिल्कुल कंसर्न तो आया था, लेकिन ऑब्वियसली टोटल इतना ज़्यादा नहीं था। एक पार्टनरशिप की बात थी और मेरे ख्याल से जिस तरह बंगलजाई और दानिश ने जिस तरह मैच्योरिटी के साथ खेले, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस मैच में। और अगर हम थोड़ा बैटिंग की तरफ आएँ तो आपकी अपनी फॉर्म भी थोड़ा वरी है आपके लिए, क्योंकि 2 मैचेस में ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। नहीं देखिए, T20 क्रिकेट है, 2 मैचेस इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होगा ख़ुद पे, लेकिन ओबियसली स्टेप अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं और तकरीबन हमें हर मैचेस जीतने होंगे। तो ओबियसली एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन, ओबियसली मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में अच्छी बैटिंग करूँ। क्योंकि लायंस ने भी काफ़ी नज़र रखी हुई है आपके मैचेस के ऊपर, कहीं ना कहीं आपका उनके साथ टाई होने वाला है, तो मैचेस आगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेटली मैचेस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह का अभी पूल बन चुका है, तो कोशिश करेंगे हम अपने मैचेस जीतें और हम कोशिश करेंगे हम टॉप पे फिनिश करें। एक एरिया ऑफ कंसर्न फील्डिंग भी है, हमने पिछले मैच में भी देखा बहुत आसान कैचेस ड्रॉप किए गए, आज भी कैचेस आसान ड्रॉप किए गए, उस पर बात होगी, प्रैक्टिस होगी। डेफिनेटली उस पर प्रैक्टिस तो नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पिछले मैच में बात की थी कि एक एटीट्यूड होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एज ए नेशन हम रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, हम प्रोसेस पे यकीन नहीं करते। तो हमेशा मेरी इनसे बात भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए प्लेयर, एज ए टीम हमें प्रोसेस पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट तो कभी आपके हाथ में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपका प्रोसेस कंसिस्टेंट होगा, अच्छा होगा, तो उसमें मुझे लगता है रिज़ल्ट भी कंसिस्टेंट मिलते हैं। हैदर अली आज बैटिंग पे नहीं आए, उनकी फिटनेस का कोई मसाइल तो नहीं? जी बिल्कुल, उसको फील्डिंग के दौरान थोड़ा सा उसकी फिंगर का इशू हुआ था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि हमारा इन फॉर्म बैटर है, हमारा मेन प्लेयर है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसको बैटिंग ना दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो अगले मैचेस में हम मिस करें उसको। All the best for the remaining games, Shadab Khan. Thank you. Right, that is all we have from the presentation. Back to you guys in the commentary box. Thank you very much, Ali Yunus. So a one-sided game after the drama of Super Sunday yesterday. It turned out to be a damp squib. 106 for 9, played 109 for 4. Engro Dolphins putting up a paltry total. Fahim top scoring with 25. Wasim Arafat and Ahmad Butt amongst the wickets. Bangalzai's half century made sure there were no further hiccups after the 3 early losses as they went over the line in 15 overs. Samin Gul and Hasanullah chipping in with 2 wickets apiece. The action continues here at the Rawalpindi Cricket Stadium. Tomorrow, another big encounter coming your way. Allied Bank Stallions will be taking on Nurpur Lions, and that will be a midday start right here at the Pindi Cricket Stadium. Well, I hope you enjoyed our broadcast today. From all of us here at the Pindi Stadium, it's time to say goodbye, and we look forward to your company tomorrow. Until then, it's goodbye. And the finger has finally gone up. Hold him, off stump, goes flying. Ahmad Butt boxing Umar Amin with the in-swinger. और ये आउट हो जाएंगे. Oh well, straight to the fielder. And gone. The second ball duck to Shadab.
Oh, knocked him over. And that is the celebration. और यहाँ ये कदमों का इस्तेमाल कर गए हैं, फुल शॉट खेल दिया, मैच का इख्तिताम किया शायान शान तरीके से। अराफात में हाथ से